स्टार्ट है कैमरा को तो मु स्क्रीन ने आसुची पूरा क्या गुड मॉर्निंग एवरीवन सो आज आम स्टार्ट करवा आम साइंस एंड टेक रो एमसीक्यू डिस्कशन तो यार फॉर्मेट रहिबो कि आम चार्टा पार्ट रे को डिवाइड करवा अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस आज डिस्कस करवा ट्राई करवा आम आउ एवरी पार्ट पर 3 to 4 मिनिट्स की 5 मिनिट्स आम ब्रेक नवा सो वी विल स्टार्ट मु सब क्वेश्चन डिस्कस करबा इंपोर्टेंट पॉइंट जहाँ की जोटा की दरकार से क्वेश्चन पाई रिलेटेड आपण माने सेटा जट डाउन करि परिबे कि जहाँ भी ए जो पीडीएफ टा एमसीक्यू पीडीएफ टा आपन को मिल जिबा आपण कांटेक्ट करि नै परिबे सो वी विल स्टार्ट कि फर्दर केमती कोन क्वेश्चन रहउची साइंस एंड टेक पार्ट माने बायोटेक्नोलॉजी पार्ट आउ तापरे रहिला हमर डिफेंस रो किछि पार्ट रहिला आउ तापरे रहिला हमर स्पेस रिलेटेड पार्ट एमती बहुत सारा पार्ट्स हम कवर करियो सो लेट करिबा चलंदु स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन रो तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में देखा दउथबो which one of the following is not correct regarding the Nipah virus so Nipah virus upare pacharchi first hochi it is a zoonotic virus it was first recognized in 1999 during an outbreak among pig farmers in Malaysia its symptoms include fever headache muscle pain vomiting and sore throat so ethre correct answer kuta habo so correct answer hochi none of the above it is a zoonotic disease hela zoonotic disease mane it is carried by means fruit bat eta carry kare Nipah virus को hela तो एटा होची zoonotic disease तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची with reference to the sickle cell disease consider the following statements it is a non hereditary disease first option second hochi India has the highest prevalence of sickle cell disease in South Asia which of the statement above is incorrect यार आंसर कमेंट रे आपण देई परिबे यार आंसर तो यार आंसर होची ट्राई करंतु से पचाची आर इनकरेक्ट तो फर्स्ट ऑप्शन होची इनकरेक्ट काहे ना इट इज अ हेरिडिटरी डिजीज आउ एटा होची ठीक ऑप्शन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ सिकल सेल इन साउथ एशिया ए पॉइंट गुडा मन रखतंतु इंडिविजुअल पॉइंट बट सिकल सेल डिजीज विषय रे ए जिंस गुडा आईडिया आपन रखिया को पड़िबो नेक्स्ट होची PAROS developed by ISRO is used for which of the following purpose first होची predicting weather patterns second होची aerodynamic and aerothermal analysis of aerospace vehicles एथरु थर्ड ऑप्शन होची monitoring satellite health और डी ऑप्शन होची mapping terrestrial terrain ए भीतर कोटा ठीक ऑप्शन एरा आंसर होची बी एटा होची ठीक ऑप्शन aerodynamic and aerothermal analysis of aerospace vehicle in the sense जहाँ भी space vehicles हमें लॉन्च करछे स्पेस को तार aerodynamics और efficiency चेक करिया को ए मिशन टा लॉन्च कराई छी बाय ISRO then fourth होची with reference to Council of Scientific and Industrial Research which of the following statement is or are correct first होची it was established as an autonomous body in 1942 headquartered at Mumbai it has a dynamic network of 37 national laboratories in India a through correct option quota one only two only both one and two दे परिवार आंसर कमेंट सेक्शन रे चैट सेक्शन रे तो यार आंसर होची टू ओनली ए लोकेशन टा भूल अछि हेडक्वार्टर एट दिल्ली हैला नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिया what did the discovery of reverse transcriptase demonstrate about the flow of genetic information it can only flow from DNA to RNA to protein RNA can give rise to DNA proteins can be directly synthesized from RNA
ऑप्शन डी होची आरएनए इज अननेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एथुर से पचारची व्हाट डिड द डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डेमोन्स्ट्रेट तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रो डेमोन्स्ट्रेट कौन कला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम सेटा कौन डेमोन्स्ट्रेट कला आंसर होची आरएनए कैन गिव राइज टू डीएनए यूजुअली कौन हुए ना डीएनए रु आरएनए हुए ताको कह जाए कौन ट्रांसक्रिप्शन बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन हम ना ऑपोजिट हम जेहेतु रिवर्स अच्छी देन आरएनए रु डीएनए हम तो सेटा को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कह जाए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन which of the following statement accurately describes the Phenome India project option A होची a project aimed at collecting genetic data from Indian individuals to develop new drugs a longitudinal health monitoring initiative to assess risk factors for non-communicable diseases in India, a program to promote traditional medicines practices among Indian communities. यार आंसर कौन होगा? तर यार आंसर हम बी longitudinal health monitoring initiatives assess risk factors for non communicable diseases in India तो एटा गोटे longitudinal study करा हबो Indian population ऊपर to assess the risk of NCDs non communicable diseases जार कि high risk अछि like cancer hypertension ए सब disease ऊपर research करा हबो और data collect करा हबो हैला next होची which of the following is not correct regarding tuberculosis TB it is an infectious disease caused by a virus it is spread through the air when infected people cough, sneeze or spit. Its symptoms include prolonged cough, chest pain, fatigue, weight loss, fever and night sweats. Option D होची none of the above. तो यार आंसर कौन होगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन आंसर दवा को ट्राई करो एथरे कौन होगा आंसर यार आंसर होची ए कारण वायरस नो इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया को बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैला माइकोबैक्टीरियम आ गोटे जिनस मन रखिबो टीबी यूजुअली लोक माने भाबंदी टीबी हैला माने खाली कफ होबो स्नीज कफ होबो लंग्स अफेक्ट होबो एटा नुहे टीबी अलगा जगह रे भी बॉडी रो अलगा पार्ट्स रे भी हेई पारे लाइक इंटेस्टाइन रे हेई परिबो स्पाइन रे हेई परिबो तो टीबी खाली चेस्ट को अफेक्ट लंग्स को अफेक्ट करबे ता नुहे टीबी अलगा जगह को भी अफेक्ट करबो ए जिनस गोटे माइंड रे रखथिबे which of the next question which of the following statement are correct regarding the gene therapy it can replace a disease causing gene with a healthy copy of gene it can inactivate a disease causing gene that is not functioning properly it can introduce a new modified gene into the body to help treat diseases ए भितरु को स्टेटमेंट करेक्ट जीन थेरापी एटा तो गोटे बहुत ब्रॉड कांसेप्ट एथरे बहुत नुवा रिसर्च भी होउची तो एथरे ऑलमोस्ट सब जिनस करी हबो जहाँ जो ऑप्शन सब प्रोवाइड करे सब जगह करी हबो डिजीज कॉजिंग जीन को रिप्लेस करी हबो इनएक्टिवेट करी हबो डिजीज कॉजिंग जीन को न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस करी हबो मॉडिफाइड जीन जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आसुची तो से सब जिनस करी हबो जीन थेरापी तो आंसर होची all of the above the next Hawking radiation is a theoretical phenomena associated with Hawking radiation कौन हैला तो एथरे से ऑप्शन कौन देछि the accretion disk of a black hole the singularity at the center of a black hole the event horizon of a black hole option D होछि the gravitational lensing effect of a black hole तो यार आंसर कौन होबो दागो ट्राई करो तो यार आंसर अब Hawking radiation is a theoretical phenomena associated with event horizon of a black hole तो event horizon कौन एटा फर्स्ट हम बुझिया पड़ियो जदी एटा गोटे ब्लैक होल हैला तार गोटे लिमिट थिबो एटा थरा गोटे लिमिट एटा होची तार इवेंट होराइजन ए लिमिट को हमें कहूचे इवेंट होराइजन कारण बिकॉज टिल देन या पूर्व जदी किछि ऑब्जेक्ट अछि कि लाइट अछि या पूर्व से रिटर्न करि परियो बट वंस ए इवेंट होराइजन क्रॉस कला इट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न माने
एठू आउ या भितरु जदि आउ गला से ब्लैक होल भितर को ही जीव आउ बाहर को आसी परियो तो ताकू कहा जाए इवेंट होराइजन तो एठू जो रेडिएशन बाहरुची ताकू हॉकिंग रेडिएशन कहा जाए आ एटा स्टीफेन हॉकिंग प्रपोज करथिले हला। नेक्स्ट होची क्वेश्चन नंबर 10 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोक्सीयूरिया। हाइड्रोक्सीयूरिया कौन एटा गोटे ड्रग टा तो पचारची कौन इट इज अ माइलोसप्रेसिव एजेंट it is used to treat sickle cell disease and thalassemia which of the following statement given above is or are correct option होची 1 only 2 only both 1 and 2 d होची none of the above तर आंसर होची both 1 and 2 एटा मु बुझे दोजे टिके हाइड्रोक्सीयूरिया कोन ना एटा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया ट्रीट करिया को यूज करा जाए एटा माइलोसप्रेसिव एजेंट माने कोन एटा बोन मैरो को टिके सप्रेस करिया को ट्राई करे ताकि रेड ब्लड सेल्स जो प्रोडक्शन हो जामा बोन मैरो रे रेड ब्लड सेल्स जो प्रोडक्शन हो जे बोन मैरो रे तारो नंबर्स कम होबो ताकि सिकल सेल जदी सिकलिंग भी जदी होउची हमर रेड ब्लड सेल रे तार इफेक्ट ता कम पड़िबो तो हाइड्रोक्सीयूरिया सेतरे हेल्प करे बोन मैरो को सप्रेस करिवो टिके आ हमर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन कमेबो एटा बोथ सिकल सेल डिजीज रे यूज होची और थैलेसेमिया रे भी यूज होची तो यार आंसर होची बोथ 1 and 2 तो नेक्स्ट with reference to black hole consider the following statement a black hole does not have a surface like a planet or star first option second hochi the center of the black hole is a gravitational singularity a point where the general theory of relativity breaks down यार आंसर कौन होगा यार आंसर होगा बोथ 1 and 2 तो ब्लैक होल कौन ब्लैक होल केमती फॉर्मेशन हुए बेसिक ब्लैक होल फॉर्मेशन केमती हुए ब्लैक होल फॉर्मेशन में गोटे स्टार जदी गोटे पर्टिकुलर तार गोटे मेजरमेंट होती से मेजरमेंट रो जदी अधिका साइज थिबो से ब्लैक होल फॉर्मेशन हो यूजुअली कौन हुए जेतले गोटे स्टार तार सब फ्यूएल यूटिलाइज कर दिए आ तापर फ्यूएल भी न थाए तो सी कौन करे इम्प्लोड करे निज वेट रे ही से इम्प्लोड करी जाए इम्प्लोड करी कि कौन हुए ना गोटे ब्लैक होल फॉर्मेशन करे जार की ग्रेविटेशनल पुल बहुत अधिका थाए तो ब्लैक होल डज नॉट हैव अ सरफेस लाइक अ प्लैनेट और स्टार तो स्टार तो कौन हुए स्टार का जेते बेले तार सब फ्यूएल यूज कर दिए तो से नीचे निज वेट रे ही इम्प्लोड करी जाए इम्प्लोड करी कि ब्लैक होल फॉर्मेशन करे तो ये ऑप्शन टा ठीक दे डज नॉट हैव सरफेस नेक्स्ट होची द सेंटर ऑफ ब्लैक होल इज अ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी where the general theory of relativity breaks down तो एटा हम देखिले कि गोटे ब्लैक होल सेंटर रे ग्रेविटेशनल पुल बहुत अधिक था इवेंट होराइजन देखिले पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जोटी कि ऑब्जेक्ट जदी आसिला ता वापस हो जाई परिबोनी सेठू से ब्लैक होल भीतर को ही पळेबो ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक अछि नेक्स्ट एटा तो हाइड्रोक्सीयूरिया ऑलरेडी देखिले फिर भी आ गोटे क्वेश्चन अछि हाइड्रोक्सीयूरिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ is used in which of the following food preservative food ripening substance herbicides और drugs for treating sickle cell disease एटा तो ऑलरेडी देखि देछे ऑप्शन डी नेक्स्ट हो जे 13 नंबर क्वेश्चन with reference to the Hawking radiation consider the following statements Hawking radiation विषय से पचारछि the theory was proposed by Stephen Hawking in 1974 the particles that escape the black hole's gravitational pull are called Hawking radiations एक्सक्यूज मी एथरो पचारछि करेक्ट स्टेटमेंट दीटा भितर कोटा ट्राई करंदो आंसर करियाउ यस वेरी गुड तेर आंसर होची बोथ 1 and 2 तो हॉकिंग रेडिएशन कौन फर्स्ट जानि दबा तो हॉकिंग रेडिएशन माने पार्टिकल्स जोडा कि हमरो ये अछि माने ब्लैक होल पाखिरे अछि जोडा ड्यू टू देयर क्वांटम प्रॉपर्टीज से माने किछि रेडिएशन माने एमिट करंती से रेडिएशन टा को कहा जाउची हॉकिंग्स और एटा स्टीफन हॉकिंग फर्स्ट टाइम प्रपोज करथिले नेक्स्ट होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नैनोपार्टिकल्स ऊपर क्वेश्चन अछि nanoparticles exhibit unique properties like
properties due to their high surface area to volume ratio. एटा गोटे पॉइंट. नेक्स्ट होची the synthesis of nanoparticle can be achieved through both top down approach and bottom up approach. Which of the following statement above are correct? 14th आंसर कौन होगा? कमेंट रे दवा को ट्राई करंतु. आंसर कौन? आंसर हम बोथ 1 and C. तो फर्स्ट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. फर्स्ट ऑप्शन टा nanoparticles exhibit unique properties due to their high surface area over volume. एटा कौन हाई सरफेस एरिया ओवर वॉल्यूम? जेहेतु तांकर नैनोपार्टिकल साइज बहुत कम 10 to the power -9 ए टाइप रो साइज थाए तो तांकर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम बहुत अधिक है. तो सेहित में से माने बहुत जगह रे यूज करंती यूनिक यूज थाए तांकर. फॉर एग्जांपल ड्रग डिलीवरी रे यूज करा जाए माने इफेक्टिवली ड्रग टा बहुत जगह रे डिलीवर करिया. नैनो यूरिया रे यूज करा जाए एफिशिएंट माने नॉर्मल जदी यूरिया 20 to 25% इफेक्टिव हो जे नैनो यूरिया 85% इफेक्टिव. कोन पई? एई गोटे जिंस पई हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम. कम साइज रे से माने बहुत जिंस डिलीवर करि परिबे. तो सेहित पई नैनो पार्टिकल एटा गोटे एडवांटेज. और सेकंड ऑप्शन टा कोन कहूची? The synthesis of nanoparticle can be achieved through both top down approach and bottom down approach. या माने कोन? टॉप डाउन अप्रोच इन द सेंस गोटे बड़ पार्टिकल अछि ताको हम भांगी भांगी छोटो नैनो पार्टिकल साइज भी करि परिबा. सेटा होची टॉप डाउन अप्रोच. और बॉटम अप अप्रोच माने कोन? हमें यूनिकली नैनो पार्टिकल्स क्रिएट भी करि परिबा. नुवा पार्टिकल्स क्रिएट करि परिबा. तो सेटा होची बॉटम अप अप्रोच. Next होची which one of the following best describes the Milgromian dynamics theory? It is a theory that describes the formation of black holes. It is a theory that modifies Newtonian dynamics to explain the rotation curves of galaxies without invoking dark matter. It is a theory that explains the origin of cosmic microwaves, background radiations. It is a theory that predicts the existence of gravitational waves. तो 15th आंसर कौन होगा? आंसर गुड मॉर्निंग. 15th आंसर दवा को ट्राई करंतु. गुड. 15th आंसर होची बी. It is a theory that modifies Newtonian dynamics to explain the rotation curves of galaxies without involving dark matter. तो dark matter इथे इन्वॉल्व होबनी. आउ जो ब्लैक होल अछि सेठी न्यूटनियन डायनामिक्स बहुत जगह काम करे. न्यूटन्स कर जो ग्रेविटी रो लॉ अछि कि अलगा किछि लॉज अछि सेगुडा ब्लैक होल रे एज इट इज काम करे बिकॉज़ ब्लैक होल रे सिनेरियो अलगा थाए. ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक थाए और ता प्रॉपर्टीज भी अलगा थाए. तो एई जिंसटा को कहा जाउची माइलोग्रामियन डायनामिक्स थ्योरी. मॉडिफाइज न्यूटनियन डायनामिक्स. तो नॉर्मल न्यूटनियन डायनामिक्स काम करेनी हमरो ब्लैक होल रे कि जोठी गैलेक्सी एंड होची गैलेक्सी रो एजेस रे एठी नॉर्मल न्यूटनियन डायनामिक्स काम करेनी. ग्रेविटेशनल लॉज काम करेनी नॉर्मल एठी. तबरे नेक्स्ट होची 16 नंबर क्वेश्चन. टर्म कार्नोट साइकिल sometimes appeared in the news is in context of poetry and unemployment, heat and engine, C होची गवर्नमेंट बजेटिंग, डी होची सोशियो कल्चरल एडवांसमेंट. यार आंसर के दे परियो कार्नोट साइकिल. एटा तो पढ़ा आइथिबो बहुत जण जो माने साइंस बैकग्राउंड थिबे पढ़ी थिबे स्कूल की कॉलेज रे. 16th आंसर कोन होबो? यस राइट 15B. ठीक. एबे 16 आंसर दा को ट्राई करन. कार्नोट साइकिल एटा पढ़ी थिबे बहुत जण 10th की +2 रे भी कि थर्मोडायनामिक्स कांसेप्ट संगे लिंक. तो कौन हुए नॉर्मल आईसी इंजन जो आईसी इंजन हमर अछि लाइक इंटरनल कंबशन इंजन से माने कोन करंती ना हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करंती. तो गोटे एनर्जी को आउट एनर्जी फॉर्म रे कन्वर्ट करंती. तो तार एफिशिएंसी टा
कार्नोट साइकिल रे डिटरमाइन हुए केते एफिशिएंट से आईसी इंजन टा हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दबा को मेकानिकल एनर्जी को हला तो सेटा कार्नोट साइकिल इज रिलेटेड टू हीट एंड इंजन हला आईसी इंजन जो इंटरनल कन्वेंशन जो इंजन यूज करते नॉर्मल व्हीकल जो इंजन था इंटरनल कंबशन इंजन से इंजन विषय थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड कांसेप्ट नेक्स्ट होची 17 व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द L1 लैंग्रेज पॉइंट रिसेंट जो मिशन चलची टू सन आदित्य L1 मिशन तो ऑप्शन कौन देती 17 रो मिनिमाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ एर्थ्स ग्रेविटी ऑन द स्पेसक्राफ्ट enabling the spacecraft to capture high resolution images of the sun's surface allowing the continuous and unobstructed observation of the sun option D होची reducing the travel time for spacecraft to reach its destination तो एथरे कौन कौन ऑप्शन हे परिबो 17 रो कौन ऑप्शन राइट आंसर कौन राइट 17 रो आंसर दाको ट्राई करो 17 आंसर होची सी allowing continuous and unobstructed observation of the sun तो यार मोर स्पेसिफिक आंसर होची सी ही हला कहना जेहेतु गोटे बहुत सारा ऑप्शन पाखा पाखी ठीक अछि बट मोस्ट एप्रोप्रिएट हम खोजे पड़ियो बिकॉज़ चारटा ऑप्शन ही देछि तो सेथरो मोस्ट एप्रोप्रिएट होची सी हला allowing continuous and non-obstructed observation of sun तो इथरे तुमको कौन कौन एक्स्ट्रा तुमको रिकॉल करिया को पड़िबो ये पय तमरो लैंग्वेज पॉइंट कौन हैला लैंग्वेज पॉइंट कौन L1 L2 L3 L4 ए पॉइंट गुडा कौन तो स्पेसिफिक मु बुझे दोची लैंग्वेज पॉइंट माने एमिति पॉइंट जोथरे कि सन आ अर्थ रो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट बैलेंस हे जाय तो आमे जदी गोटे एटा सन रहले एटा अर्थ रहला हैला तो धर गोटे लैंग्वेज पॉइंट 80 रहला हैला तो 80 कोन ना सन रो पुल जेतिकी अछि अर्थ रो पुल सेतिकी अछि तो या ऊपर ग्रेविटी रो इंपैक्ट बहुत कम थाए तो जदी आमे किछि गोटे एटी स्पेसक्राफ्ट कि सैटेलाइट रखिबा ताको हमको बहुत मिनिमम फ्यूएल रे से सेठी प्रेजेंट रहि परिबो जेहेतु ग्रेविटेशनल पुल ऑलमोस्ट इक्वल अछि तो से सेठी गोटे स्टेबल पोजीशन रे रहि परिबो तो सेति पय ताको लैंग्वेज पॉइंट को तो एबे तुमको देखिया को पड़िबो कि रिवाइज करिया को पड़िबो आउ कोन अलगा अलगा लैंग्वेज पॉइंट अछि L1 कोन L2 कोन L3 कोन एतो जणा पड़ी गला आदित्य L1 तो L1 पॉइंट L1 पोर रो पोजीशन कोठी अछि तापरे एबे आ जो रिसेंट स्पेस जो टेलीस्कोप लॉन्च करा हेछि जेम्स वेब टेलीस्कोप सेटा को लैंग्वेज पॉइंट रे अछि तो ए सब जिंस रिवाइज करिया को ट्राई करिवो हला नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 with reference to the portable optical atomic clocks consider the following statement फर्स्ट होची एथरे एटॉमिक क्लॉक विषय रे पचार छला एटॉमिक क्लॉक माने हाई प्रिसिजन जोटा कि हमें रिफर करू छ हमर टाइम माने वर्ल्ड रो टाइम को करेक्ट करिया को कि हम टाइम टा को ये मैनेज करबा से एटॉमिक क्लॉक्स रे करा जाय बिकॉज़ दे आर हाईली एक्यूरेट फर्स्ट होची इट इज बेस्ड ऑन सीजियम 133 ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हैला सेकंड होची करंटली इंडियाज नाविक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इज यूजिंग इट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इज करेक्ट one only two only both 1 and 2 neither 1 nor 2 यार आंसर जा को ट्राई करो हाँ ट्राई करो तो यार आंसर हम बोथ सॉरी बोथ में नाइदर 1 नॉर 2 तो एथरे भूल कौन है फर्स्ट होची नाविक सैटेलाइट नेविगेशन एटा ए सिस्टम यूज करूनी एटा इंडिजिनियस हमर इंडिया रो अछि इंडियन एटॉमिक क्लॉक यूज करूची हैला तो दीटा डिफरेंस अछि गोटे होची ट्रेडिशनल एटॉमिक क्लॉक आ गोटे होची पोर्टेबल एटॉमिक क्लॉक हैला तो ट्रेडिशनल एटॉमिक क्लॉक रे सीजियम यूज करा जाउची हैला सीजियम रो ये यूज करा होची आ जो पोर्टेबल अछि सेटा आयोडीन यूज करूची हैला
ହେଇଗଲା neither 1 and 2. Next option, question number 19. Consider the following statement. Donanemab is a monoclonal antibody that targets amyloid beta protein plaques in the brain. Good drug eta donanemab hela. Donanemab is the only amyloid fighting drug approved by FDA for Alzheimer's treatment. तो ये ड्रग टा रिसेंटली कौन पे न्यूज रे थिला जोटा कि FDA अप्रूव करची कौन पे न्यूज रे थिला ऑप्शन 1 इधर करेक्ट तुमको फाइंड करे अछि 1 ओनली 2 ओनली बोथ 1 and 2 तो ट्राई करो आंसर करिया को यस तेरा आंसर होगा ऑप्शन ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी that targets amyloid beta proteins plaques in the brain. Alzheimer disease कौन Alzheimer disease एटा गोटे एज रिलेटेड मोस्टली एज रिलेटेड डिजीज जोथरे कि ब्रेन रो मन रखिबार पावर कमी जाए हैला ब्रेन रो मन रखिबार पावर कमी जाए तो सेटा मोस्टली अल्जाइमर्स डिजीज ताको कहा जाए एज रिलेटेड डिजीज था एटा तो एटा डोनेमेब माने कोटे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टा हैला तो एटा ऑप्शन टा भूल टा अप्रूव करा हेनी अल्जाइमर डिजीज पे FDA द्वारा. Next, which one of the following option is correct regarding nitrous oxide? N2O विषय पचारछि. It is a greenhouse gas that heats up the atmosphere far more than carbon dioxide. It is also known as laughing gas. COH, its vapors are heavier than air. D option होछि all the above. 20 रा आंसर कोन होबो? एटा तो इजी ऑप्शन टा एटा बहुत थोर एग्जाम रे आसी जी बी N2O टा तो यार आंसर होची ऑल ऑफ द अबव तो मन रखिया रहची एटा गोटे ग्रीन हाउस गैस लाफिंग गैस भी कुआ जाय अदर नेम यार और यार वेपर्स हेवियर देन एयर माने यार डेंसिटी अधिका नॉर्मल एयर टू हला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस पैरोस ट्रीटी इज करेक्ट? आउटर स्पेस रे जो आर्म्स रेस होची ता विषय से पचारछि. 21 कोन ऑप्शन ए होची द पैरोस ट्रीटी वाज सबमिटेड टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इन 2008. The PAROS treaty aims to prevent state parties from placing any type of weapons into orbit or installing weapons on celestial bodies. Option C होची the PAROS treaty would replace the 1967 outer space treaty. Option D होची the PAROS treaty prohibits the use of any type of satellites for military purpose. से पचारछि which of the following statement about the PAROS treaty is correct? ट्राई करो आंसर करिया को. तर आंसर होची बी. एटा भूल कारण एटा यूनाइटेड काउंसिल दियानी एटा कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट रे प्रपोज करा हैतला हला तो यूनाइटेड नेशन नो एटा भूल तो पैरोस ट्रीटी एम्स टू प्रिवेंट स्टेट पार्टीज फ्रॉम प्लेसिंग एनी टाइप ऑफ वेपन्स इनटू द ऑर्बिट इंस्टॉलिंग वेपन्स ऑन सेलेस्टियल बॉडीज नाम तर नेम रु ही जाना पड़ जे आर्म्स रेस को प्रिवेंट करबो तो ए ऑप्शन टा ठीक ऑप्शन हला एटा रिप्लेस करबोनी एटा ऑलरेडी एक्जिस्टेंस अछि आउटर स्पेस ट्रीटी रे हला और पैरोस ट्रीटी प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ सैटेलाइट और मिलिटरी पर्पस एटा केमती हबो एटा तो ऑलरेडी सैटेलाइट्स यूज होचे मिलिटरी पर्पस ये पई इंडिया यूज करची यूएसए यूज कर समस्त सैटेलाइट यूज करछनी तांको इंटेलिजेंस गैदरिंग पई मिलिटरी पर्पस पई हला तो ये ऑप्शन टा ठीक अछि भूल अछि सॉरी. तापर नेक्स्ट with reference to the Truenat platform consider the following statement. It was developed by the WHO molecular diagnostics. It is a portable battery operated machine that can be deployed at labs, health centers and even in the field. तो एटा गोटे Truenat platform कोन
क्वेश्चन पचारछि हैला which of the following statements given above are correct option A one only option B two only option C both one and two option D neither one nor two तो एथरो आंसर कोन हबो एटा केते नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन रा आंसर कोन हबो राइट 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 22 रो बी तो यार आंसर हम 22 बी एटा गोटे डायग्नोस्टिक मेथड गोटे एटा गोटे गोवा बेस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर एटा को इन्वेंट करछि ट्रूनेट प्लेटफॉर्म हैला डब्ल्यूएचओ नुहे एटा गोटे बैटरी ऑपरेटेड मशीन जो डिप्लॉयड फॉर लैब जोटा लैब रे यूज कराबो एटा गोटे पीसीआर कहया को पीसीआर टेक्नोलॉजी यूज करके डायग्नोस करियो वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक वायरल डिजीजेस लाइक एचआईवी एचसीवी इवन बैक्टीरियल डिजीज लाइक टीबी भी डायग्नोस करियो ए ट्रूनेट प्लेटफॉर्म रे एटा पीसीआर टेक्नोलॉजी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी यूज करके डायग्नोस करिया को चेष्टा करे हैला एटा गोवा बेस्ड गोटे डायग्नोस्टिक्स एंड माने स्टार्टअप कहया को गले कि गोटे कंपनी एटा को डेवलप करछि नेक्स्ट होची 23 with reference to the council of scientific and industrial research CSIR which of the following statement is are correct it was established as an autonomous body in 1942 headquartered at New Delhi. It has a dynamic network of 37 national laboratories in India. Select the correct answer using the code given below. Option A होची one only, option B होची two only, option C होची both one and two, neither one nor two. यार आंसर कौन होगा 23 रो ट्राई करो दबागु 23 रो एटा तो करिचे ऑलरेडी ऊपर है ये क्वेश्चन टा ऑलमोस्ट डिटो करिचे ऊपर यार आंसर हम सी ऊपर भूल देइथिला कोन न्यू दिल्ली जगह रे मुंबई दे देइथिला तो यार राइट आंसर होची न्यू दिल्ली आ एटा तो ऑलरेडी देखि छै हम ऊपर 37 नेशनल लैबोरेटरीज इन इंडिया सीएसआईआर अंडर पीएम ऑफ इंडिया सीएसआईआर टा पीएम ऑफ इंडिया का अंडर रे अछि तापर 24 क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कवच सिस्टम ऑप्शन कौन कौन देइछि कवच सिस्टम विषय से पचारछि इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर एंश्योरिंग सेफ्टी इन ट्रेन ऑपरेशंस तापर नेक्स्ट होछि इट एक्टिवेट्स द ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इफ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर द स्पीड रेस्ट्रिक्शंस तो एथरे ऑप्शन कौन वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉर टू 24 आंसर कौन हम कवच सिस्टम बहुत न्यूज रे थिला एथर जो ट्रेन एक्सीडेंट एते होतला तो यार आंसर हम बी ओनली टू ओनली तो कवच सिस्टम कौन ना एटा ट्रेन रे बे रिसेंटली फिट करा जाउची ऑटोमेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जेते बेले की जना पड़छि गोटे स्पीड अधिका गोटे लेवल अछि कि किछि ट्रैक रे किछि असुविधा अछि जोटा कि पूर्वरु जना पड़ि जाउची ड्राइवर माने एक्टिवली ब्रेकिंग करि पारनांती किछि गोटे प्रॉब्लम होउची कि ट्रेन ने किछि इशू आछुची सेटा ऑटोमेटिकली ब्रेक कर दबो ट्रेन को तो एटा सेफ्टी पे इंट्रोड्यूस कराई छै कवच सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम एटा गोटे ऑटोमेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आ एटा डीआरडीओ डेवलप करनांती एटा आरडीएसओ डेवलप करछनी एटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कर गोटे रिसर्च विंग गोटे हैला तो एटा खाली टू ओनली हबो डीआरडीओ डेवलप करना तापर नेक्स्ट 25 with reference to the initiative on critical and emerging technology ICET consider the following statements it was announced by India and Japan on the sidelines of Quad Summit in Tokyo 2022 it comprises key technology sectors such as space semiconductor advanced telecommunication AI etc which of the following statement given above is or are correct one only two only both one and two neither one nor two तो यार आंसर कौन हम 25th रो तो यार आंसर हम टू ओनली
कंट्री भूल दिया एटा कौन हम यूएसए है इंडिया एंड यूएसए मिसिकी लॉन्च करछंती आउ सेकंड ऑप्शन तो मोस्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड बहुत ब्रॉड अच्छी इन स्पेस को कवर करछि सेमीकंडक्टर कवर करछि टेलीकम्युनिकेशन कवर करछि एआई को कवर करछि हैला अपन एसेक्ट्रा भी दिया तो आउ किछि नुवा जिंस को भी कवर करता हो पारे तो एटा मोस्टली ब्रॉड अच्छी तो एटा ठीक आ एटा तो कंट्री ही भूल दिया यूएसए नेक्स्ट एटा ड्रग्स ऊपर क्वेश्चन अछि Mifepristone recently seen in the news is related to which of the following एटा आंसर किए दे परिबो 26 ए ड्रग्स ता न्यूज रे थिला रिसेंटली 26 रो आंसर ट्राई करो 26 रो आंसर हबो इट्स अबॉर्शन पिल मिफेप्रिस्टोन जे मिजोप्रोस्टोल दीटा ड्रग्स अछि हला मिसोप्रिस्टोन रो काम कोन ना प्रोजेस्टेरोन रो बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है प्रेगनेंसी को माने प्रोग्रेस करिया को फर्दर प्रेगनेंसी टा को प्रोजेस्टेरोन रो बहुत बड़ा रोल थाए तो ताकू अफेक्ट करे प्रोजेस्टेरोन रो कंसंट्रेशन वेरी कराए ए ड्रग तो कोन हुए ना प्रेगनेंसी टा फर्दर प्रोसीड करि पारेनी तापर आउ डे ड्रग अछि मिसोप्रोस्टोल तार काम कोन ना से जो प्रेगनेंसी टा की मिसकैरेज हैला ताकू एक्सपेल करिवो बॉडी रु माने बॉडी रु से जो फिटस टा की जोटा की अबॉर्शन करिया को चाहउछंती तो सेटा को बॉडी रु बाहर करिवो सेटा से ड्रग रा नाम होची मिसोप्रोस्टोल हैला ए दीटा ड्रग अछि आकु दीटा जाको जदी मिसोप्रोस्टोल आसिला भी और मिसोप्रोस्टोल दीटा जाको आसिले भी एटा कोन ना अबॉर्शन पिल्स हैला राइट 26 रो डी करेक्ट तापर नेक्स्ट 27 द टर्म्स लाइक कैसगेवी एंड लिफजेनिया sometimes appeared in the news are related to ए दीटा हमें कांसेप्ट गोटे पढिचे जीन थेरेपी ता रिलेटेड ए कांसेप्ट ए दीटा माने कोन ट्रीटमेंट प्रोसीजर कहया गले कि ड्रग कहया गले हैला ए दीटा ड्रग एटा को रिलेटेड रिसेंटली न्यूज थिला ट्यूबरकुलोसिस सिकल सेल डिजीज मलेरिया नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के यार आंसर दे परियो कैसगेवी एंड लिफजेनिया दीटा टर्म दे दबो क्वेश्चन पचा दो रिलेटेड टू व्हाट नो 27 स्किन ऑप्शन बी नुहे यार आंसर होची सिकल सेल डिजीज एटा जीन थेरेपी यूज करिकी ए दीटा मेथड जीन थेरेपी यूज करूछन हैला जीन थेरेपी यूज करिकी सिकल सेल डिजीज को ट्रीट करिया को ट्राई करूछन एटा रिसेंटली अप्रूव करा जायछि किसी कंट्रीज लाइक यूके तो से माने ए ट्रीटमेंट मोडालिटी टा को अप्रूव करछनी ट्रीट करिया को सिकल सेल डिजीज अदर कंट्रीज भी अछंती बट ए दीटा टर्म मन रखता इट इज एसोसिएटेड विथ सिकल सेल डिजीज आउ को मेथड यूज करछनी जीन थेरेपी मेथड हैला नेक्स्ट सॉरी के आंसर देथले 27 रो बी करेक्ट 27 रो बी सिकल सेल डिजीज नेक्स्ट 28 द टर्म cloud 3.5 sonnet recently seen in the news is in context of cloud 3.5 sonnet context of कुथरे एटा देखाई फिफ्थ जनरेशनल एयरक्राफ्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्लाउड फॉर्मेशंस इन स्ट्रेटोस्फीयर एस्ट्रॉयड बेल्ट ए टर्म टा रिसेंटली न्यूज रे थिला को रिलेटेड थिला यस करेक्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल एटा तो बहुत एबे न्यूज रे अछि एटा होचे एआई रिलेटेड माने ए टर्म टा रिलेटेड टू एआई क्लाउड 3.5 सोनेट
is related to large language model माने कौन है ना बहुत सारा information और data जो माने process करछनी large language analysis तो ये सब जिनस रे recently AI बहुत use होची तो सही related ए term टा news रे थिला हैला large language model टा भी AI related only तापर next 29 which of the following statement is not true about methanol. It is also known as wood alcohol. It is colorless, volatile liquid with a pungent odor. It is used as solvent in paints and varnishes. The Food Safety and Standard Regulation 2018 completely prohibited use of methanol in any liquor. यार आंसर कौन हम मिथानॉल रिलेटेड कोटा भूल स्टेटमेंट सेटा फाइंड करियर अछि 29 yes AI रे ठीक तो नेक्स्ट आंसर दा ट्राई करो मिथानॉल टा करेक्ट 29 डी the Food Safety and Standard Regulation completely prohibits use of methanol in any liquors हैला किछि जगह रे लिक्विड रे यूज करा जाय मिथानॉल टू प्रिवेंट मिथानॉल पॉइजनिंग आ बहुत जगह रे कोन हुए नॉर्मल जो कंजम्पशन करूछनी सेटा इथेनॉल थाए जोटा कि नॉर्मल मार्केट रे लोक कंज्यूम करथन सही जगह इथेनॉल बहुत जगह रे फैक्ट्री भी यूज होची तो से माने कोन करंती ना सेथरे बहुत टिके अमाउंट ऑफ मिथानॉल ऐड कर देनी ताकि लोक माने सेटा कंज्यूम न कर दियंतु हैला आउ किसी जगह मिथानॉल भी ऐड करा जाए मिथानॉल पॉइजनिंग प्रिवेंट करिया को हैला इथेनॉल रे ऐड करा जाए नेक्स्ट पुष्पक एटा तो बहुत न्यूज रे थिला एबे भी अछि पुष्पक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए होची इवैक्यूएशन ऑपरेशंस बाय इंडिया न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज लॉन्च व्हीकल बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यार आंसर कोन एटा बहुत न्यूज रे अछि पुष्पक एटा व्हीकल टा तार फोटो भी बहुत आछि इसरो वेबसाइट रे भी आ फोटो भी तार शेयर करथिले 30 रो आंसर कोन यस 29 डी करेक्ट 30 रो आंसर कोन ठीक अच्छे 30 आंसर होची इट इज अ लॉन्च व्हीकल सी लॉन्च व्हीकल बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च व्हीकल कौन पे लॉन्च व्हीकल तो बहुत ऑलरेडी अच्छी बट इटा कौन पे मोस्टली बहुत न्यूज रे आसला बिकॉज इट इज रीयूजेबल मोस्टली पूर्वरु जहाँ भी आम लॉन्च व्हीकल थिला जीएसएलवी हो एसएलवी हो पीएसएलवी हो एगुडा कौन रीयूजेबल नथिले थरे ताको आम स्पेस रे पठेले देन सेकंड टाइम सेटा ऑलरेडी स्पेस रे डिसमेंटल हे जिवो सेकंड टाइम सेटा को रीयूज करबन बट एटा रिसेंटली ये ट्रायल कराई पुष्पक टा एटा हो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल माने मल्टीपल टाइम सेटा यूज करबो गोटे थर आमे किछि सैटेलाइट पठेले स्पेस को देन सही लॉन्च व्हीकल टा पुनी रिटर्न कर जिवो अर्थ को आ सेटा पुनी सेकंड टाइम यूज करबो तो एटा हमको मोस्टली कॉस्ट इफेक्टिव पड़ियो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ियो एटा हो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे न्यूज रे थिला लॉन्च व्हीकल बाय इंडियन स्पेस मोस्टली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल yes correct 30 rasi right tapre next which one of the following countries along with India set a launch the space maitri mission को country संगे हमें मिसी की करिचे आ हमें तांकर गोटे सैटेलाइट भी लॉन्च करिबा एबे रिसेंटली लॉन्च करिबा स्पेस मैत्री मिशन अंडर रे से कंट्री रो गोटे सैटेलाइट हमें लॉन्च करिबा के दे परिबा आंसर 31 रो एटा न्यूज रे अछि थर्टी वन को आसो 30 सरी गलानी करेक्ट 30 रो सी आंसर करेक्ट 31 रो आंसर दा को ट्राई करो
ना 31 रो बी नुहे सी आंसर यार ऑस्ट्रेलिया आ तांकर आमे गोटे स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करिया को जाउचे एई स्पेस मैत्री मिशन अंडर रे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोलैब करूछनी ऑस्ट्रेलिया रे गोटे स्पेस क्राफ्ट आमे लॉन्च करबा तार नाम होची ऑप्टिमस हला नेक्स्ट which one of the following countries has recently collaborated on the Trishna mission along with India so Trishna mission कार collaboration हाँ Trishna होची फ्रांस संगे इंडिया रो कोलैबोरेशन एथरे कोन इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट्स हमें लॉन्च करबा हला तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम टाकू से सैटेलाइट ट्रैक करियो नेक्स्ट होची कंसीडर द फॉलोइंग डार्कनेट विषय रे हला फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्कनेट द डार्कनेट इज part of deep web that is not indexed by search engines and requires special software to access है डार्कनेट इज पार्ट ऑफ डीप वेब माने डीप वेब अंडर रे डार्कनेट आसुची आ ता पे स्पेशल सर्च इंजिन दरकार टू एक्सेस इट डार्कनेट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग एंड साइबर क्राइम tor is a browser commonly used to access the darknet due to its anonymity features fourth hochi law enforcement agencies are unable to monitor or investigate activities on the darknet तो इथरे कौन पचार करेक्ट हाँ करेक्ट स्टेटमेंट ए भितर कोटा चारटा भितर कोटा करेक्ट स्टेटमेंट यस 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 थर्टी थ्री डार्कनेट विषय चारटा भितर को स्टेटमेंट करेक्ट 1 2 3 4 भितर ना 33 ना सी नुहे 33 रो आंसर होची ए एटा होची करेक्ट ऑप्शन डीप वेब जोटा अछि नॉर्मल हमें जो इंटरनेट देखुचे सेटा गोटे बहुत फास्ट आ हमें तार सब इनफॉरमेशन हमें एक्सेस करि पारने हम नॉर्मल जो हमें वेबसाइट यूज करछे वेब रे जति की सब इनफॉरमेशन अछि सब जगह हम एक्सेस करि पारने तार केते पार्ट हम एक्सेस करि परछ बहुत जगह इनविजिबल भी अछि ताको कहा जाउची डार्क वेब माने जोटा कि हमें नॉर्मल यूज डे टू डे यूज रे सेगुडा को एक्सेस करि पारु हला सेही भितरे तार गोटे सबसेट होची डार्क नेट हला नेक्स्ट ऑप्शन टा कोन स्पेशल सर्च इंजन दरकार ताको सर्च करिया को हला तापर नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन टा को एक्सक्लूसिवली यूज्ड एई स्टेट ए वर्ड टा ही जिनसोडा को भूल कर दोची डार्क नेट यूज करा जाउची ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम पे बट एक्सक्लूसिवली खाली ता पे यूज करो से नै वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस भी सेटा यूज करछन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से माने यूज करछन एटा ट्रैक करिया को बहुत जिंस को हला तापर नेक्स्ट टॉर आमे नॉर्मल जो एबे सर्च इंजन यूज करछे गूगल क्रोम हो मोजिला फायरफॉक्स हो किछि भी सेटा होची नॉर्मल आमे डे टू डे जो नॉर्मल वेब आमे यूज करछे बट डार्क नेट को सर्च करिया को हमको डेडिकेटेड तापे सर्च इंजन दरकार सेही गोटे सर्च इंजन ना होची टॉर सेही टाइप रो गोटे आ बहुत अछि बट गोटे होची टॉर हला एटा गोटे सर्च इंजन ता कि डार्क वेब रे सर्च करिया के यूज करा छै फोर्थ ऑप्शन काहे की भूल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर अनेबल टू मॉनिटर एंड इन्वेस्टिगेट एक्टिविटीज ऑन द डार्क नेट एटा केमती हबो सेमान तो निजे यूज करछनी बहुत जगह रे ए जिंस को ट्रैक करिया को कोठी कोन डार्क नेट रे इलीगल काम होची तो से माने यूज करूछंती एटा हला तो यार आंसर कोन अच्छा ऑप्शन देइथिला कि सॉरी 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 ठीक ठीक तो यार आंसर कौन हम 33 रो ए
है 1 and 3 टॉर तो आम जानिले कि एटा यूज करा जाउची नॉर्मल डार्क वेब रे सर्च करे को फर्स्ट ऑप्शन तो सेमती भी करेक्ट तो ऑप्शन 1 and 3 तापर नेक्स्ट द टर्म ओजेम्पिक एटा ड्रग टा ओजेम्पिक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ब्रोंज एज burial site diabetic medication fruit ripening agent newly discovered butterfly species यार आंसर कौन हो 34 रो यस यस 33 रहे ठीक अछि 34 आंसर कौन ए ड्रग टा एटा ड्रग टा एटा न्यूज रे एबे रिसेंटली आछि बिकॉज़ यार किछि प्रॉपर्टी जणा पड़छि सेत पे न्यूज रे अछि 34 आंसर कौन तो 34 आंसर होची बी डायबिटिक मेडिकेशन बट एटा डायबिटिक मेडिकेशन पे न्यूज रे नहीं एटा वेट लॉस पे यूज करा जाउची बहुत जगह रे तो यार वेट लॉस प्रॉपर्टीज भी अछि सेहि पई ए ड्रग टा न्यूज रे अछि ऑलरेडी एटा थिला फॉर डायबिटिक मेडिकेशन बट यार आउट प्रॉपर्टी जणा पड़छि कि एटा वेट लॉस रे भी हेल्पफुल होउछ हैला सल्ला 35th क्वेश्चन को आसीबा ने तो नंबरिंग एपट सेपट होइछि हो एटा देखिबा एने with reference to the poliomyelitis polio virus विषय पचारछि polio disease विषय पचारछि consider the following statement it is a highly infectious viral disease that largely affects children under 5 years of age the polio virus is not eradicated only two countries Pakistan and Bangladesh which of the following statement is correct यार आंसर कौन होबो ऑप्शन देछि 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 nor 2 यार आंसर होची 1 only हैला कहीं खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश नुहे अफगानिस्तान रे भी किसी केसेस ऑफ पोलियो देखा जाउची और बहुत कंट्रीज रे पोलियो इराडिकेट हे गला माने इन द सेंस जीरो केसेस एमती नहीं गोटे पर्टिकुलर नंबर ऑफ केसेस स्टिल भी देखा जाए बट जोटा बहुत मिनिमल थाए तो सेत पे हम कहू कि इराडिकेट हे जाए बट पोलियो बहुत जगह रे मिनिमल ये रे देखा जाए और अफगानिस्तान तो भी रिसेंटली देखा ही जाइछि नंबर इंक्रीज कर तो खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश नुहे अफगानिस्तान रे भी अछि आइटा गोटे वायरल डिजीज affects children largely under 5 years हला मोस्टली 5 years अंडर रे पोलियो अफेक्ट करे आ एटा गोटे कोन न्यूरोजेन पैरालिसिस हे जाय न्यूरोडिजेनेटिव डिजीज गोटे हला कोन क्वेश्चन अछि नेक्स्ट with reference to the LiFi in the Wi-Fi in the LiFi light fidelity technology consider the following statement LiFi uses radio waves to transmit data offering higher speed than traditional Wi-Fi next hochi LiFi is particularly suitable for environments sensitive to electromagnetic interference third hochi LiFi bandwidth capacity significantly higher than that of Wi-Fi technologies which of the following statement given above is correct LiFi bisare ei सब just statement दिया है भितरु कुटा कुटा correct 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 3 only 1 2 3 ट्राई करो तो यार आंसर होची 2 and 3 only माने करेक्ट कुटा एटा एटा वन टा काहेंगे भूल LiFi uses radio waves to transmit data offering speeds than traditional Wi-Fi रेडियो वेव्स नुहे विजिबल स्पेक्ट्रम यूज करा जाए LiFi रे हैला एथरे कोन देछि ना ऑफरिंग ट्रेडिशनल वाईफाई रेडियो वेव्स विजिबल स्पेक्ट्रम यूज करा जाए LiFi रे टू ट्रांसमिट डाटा और एटा बेसी स्पीड रे ट्रांसमिट हुए नॉर्मल वाईफाई रे हैला तो यार आंसर होछि 2 and 3 वन टा भूल तापरे होलोग्राम टेक्नोलॉजी पिछरे पचारछि with reference to the hologram technology consider the following statement
अच्छा एटा पार्ट 2 रो स्टार्ट हैलानी ठीक अछि हमें एतिक बंदा एने करबा एने तापरे 5 मिनिट्स ब्रेक नबा हला 5 मिनिट्स ब्रेक पर पुणी रिटर्न करबा पुणी सेकंड पार्ट स्टार्ट करबा तो आपण 5 मिनिट्स ब्रेक नियंतु आ जहां इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि चाहिले आपण जट डाउन करि परिबे हला थैंक यू 5 मिनिट्स स्टार्ट करबा एग्जैक्ट केतरा हला 12 बचला 12 5 रे हम रिटर्न
हेलो साउंड ठीक अछि तो ठीक अछि वेलकम एवरीवन स्टार्ट करिया सेकंड पार्ट 2 तो हम किछि पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर देथिले पार्ट 2 रो बट आउथरे बे जो क्वेश्चन मिस करछ सेगडा स्टार्ट करियो हला तो फर्स्ट पार्ट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन individual suffering from this medical condition take much longer time than in socially acceptable to recognize people with whom they were expected to be familiar such as spouses siblings and children माने एटा गोटे डिजीज रो कंडीशन देछि तार सिम्पटम्स गुडा देछि सिम्पटम्स कोन 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 ना से माने मोस्टली जो माने तांको क्लोज रिलेटिव थिले तांको रिकॉग्नाइज करिया को डिले करछोंदी कि रिकॉग्नाइज करि परनांती तो सेही डिजीज रो ना कोन सेटा से पचारछि कंफ्यूज भी होंती रिकॉग्नाइज करिया को सेही डिजीज रो ना कोन हैला तो से फर्स्ट ऑप्शन होछि कावासाकी डिजीज सेकंड होछि प्रोसोपैग्नेसिया सी होछि हंटिंगटन्स डिजीज डी होछि पार्किंसंस डिजीज यार आंसर यस रेडी हां यार आंसर पार्ट 2 रा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कोन हबो ए डिजीज रे कोन हुए ना माने जहा कोई गोटे जेनेटिक म्यूटेशन हुए हला एमसीटीपी जीन गोटे अछि से जीन रो म्यूटेशन हे गले तो कोन हुए ना से पर्सन तार क्लोज रिलेटिव जे कि तार वाइफ की हस्बैंड कि तार छुआ माने तांको से चिन्नी परिबोनी आगुरु बहुत इजीली चिन्नी परथबो एबे आइदर डिले करिवो चिन्नी पाकू नले चिन्नी परिबोनी सेही टाइप ए टाइप रो सिम्पटम जदी गोटे पेशेंट देखौचंती से डिजीज रो ना कोन तो यार आंसर होची प्रोसोपैग्नोसिया एटा गोटे डिजीज जोटा गोटे जेनेटिक म्यूटेशन हुए गोटे जीन अछि एमसीटीपी2 जीन ए जीन रे म्यूटेशन हे गले से माने तार क्लोज रिलेटिव को चिन्हिबारे बहुत लेट करंती कि चिन्हि पारंती ओके नेक्स्ट with reference to the Higgs boson consider the following statement Higgs boson विषय पचारछि it is a fundamental particle associated with Higgs field which gives mass to other elementary particles second hochi the Higgs boson was discovered at the large hadron collider LHC at CERN the Higgs boson is a massless particle which of the following statement given above is a correct तीनटा statement देछि ए भितरु को statement ता correct किए कहि परिबो टूर ए वन ओनली अच्छा आओ यार आंसर होची बी ए ओनली वन ओनली नुए बी फर्स्ट होची it is a fundamental particle associated with Higgs field which gives mass to other elementary particles ए दीटा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होची ना नहीं तो आइदर ए दीटा भितर गोटे ठीक थिबो गोटे भूल थिबो तो एथरे फर्स्ट स्टेटमेंट देला it gives mass to the elementary particles third statement देला Higgs boson is a massless particle mass दोउची केमती massless हे जिवो तो ए स्टेटमेंट ता ठीक ए स्टेटमेंट ता भूल और सेकंड स्टेटमेंट ता ठीक कारण Higgs boson was discovered at the large hadron collider LHC एटा बहुत न्यूज रे थिला पास्ट किछि इयर्स रे थिला बट एबे भी न्यूज रे बहुत टाइम आसुची मते यार लोकेशन के कोइ करियो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर ता कोठी अछि को कंट्री बॉर्डर रे कि को जागा रे अछि मते स्पेसिफिक के कहि परिबो कमेंट सेक्शन में आंसर करिया को ट्राई करो आसी पर एटा क्वेश्चन लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर ता को कंट्री रे अछि कि कहारो बॉर्डर रे अछि कमेंट सेक्शन में आंसर करिया को ट्राई करो
LHC टा एटा गोटे एक्सपेरिमेंट करा हेतिला मोस्टली पार्टिकल फिजिक्स रो एक्सपेरिमेंट थिला हैला जोतरा हिग्स फील्ड विषय हमको बहुत जिन जानिया को मिलथिला हैला हिग्स बोसन पार्टिकल विषय जानिया को मिलथिला तो एटा अछि फ्रांको स्विस बॉर्डर रे हैला जेनेवा स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड जेनेवा रे अछि एक्सपेरिमेंट टा करा हेतिला हैला बहुत कंट्री जेतरे पार्टिसिपेट करथिले गोटे सिंगल कंट्री नो इंडिया भी पार्टिसिपेट करथिला हैला तापर थर्ड एटा तमे देखि देछि ऑलरेडी लाइफाई विषय रे भी देखिछे तापर नेक्स्ट hologram technology. With reference to the hologram technology, consider the following statement. Holograms are two-dimensional images that appear three-dimensional under specific lighting conditions. The principle of interference and diffraction are fundamental to the creation of hologram. Holograms are primarily used in the entertainment industry for creating visual effects. Hala, tinta statement dela se pacharla above are correct. UPSC style option अछि only one, only two, all three, none. Yes, correct. Geneva, Switzerland. Yes, right. So next option को ऐसा, next question को ऐसा. तो यार आंसर होची yes की आंसर दे पर hologram विषय रे यार आंसर होची only one कोटा the principles of interference and diffraction are fundamental to the creation of hologram ये ऑप्शन टा ठीक फर्स्ट ऑप्शन कोन देछि टू डायमेंशनल इमेज hologram बहुत सारा हॉलीवुड मूवीज रे देखिथिबो कि गोटे इमेज क्रिएट हे जाय बट लाइट रो वेरियस टेक्नोलॉजी यूज करके लाइट रो वेरियस प्रॉपर्टीज डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन यूज करके गोटे इमेज टा आर्टिफिशियल इमेज टा क्रिएट करा जाय वर्चुअल इमेज गोटे वर्चुअल तो कहबे ना ऑगमेंटेड इमेज गोटे सेटा को हमें hologram टाइप रो कुआ जाय हैला with reference to the African swine fever विषय क्वेश्चन अछि which of the following statement is are correct. It is highly contagious and fatal animal disease that infects domestic and wild pigs. It is caused by large DNA virus of Aspergillidae family. Select the correct answer using the code given below. Large African swine fever. यार आंसर कौन 6 रा आंसर कौन अफ्रीकन स्वाइन फीवर 6 रा आंसर ठीक अछि एटा टिके लेट रे चलछि किसी प्रॉब्लम नै ओ यार आंसर होची बोथ 1 and 2 और एटा फर्स्ट कोडी देखा जायतिला केनिया रे हैला फर्स्ट ईयर केसेस देखिया को मिलथिला हमको केनिया रे हैला अफ्रीकन स्वाइन फीवर गोटे वायरल डिजीज टा एटा मोस्टली एनिमल्स माने को हुए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की वाइल्ड पिग को तापर नेक्स्ट एटा गोटे टेलीस्कोप विषय क्वेश्चन अछि एटा बहुत न्यूज रे थिला ए वर्ष with reference to the 30-meter telescope consider the following statements. It is proposed to be built on Mauna Kea of Hawaii Island हैला गोटे आइलैंड एटा Mauna Kea गोटे आइलैंड Hawaii Island रे अछि हैला it is a key parameter. India is a key partner in the TMT project. Which of the statements given above is or are correct? 30-meter telescope. Seven answer.
यस करेक्ट 7 आंसर होची सी एटा मोनाकिया रे अछि एटा गोटे टेलीस्कोप जोटा कि इंफ्रारेड विजिबल रो भी किछि पार्ट नियर इंफ्रारेड ए सब स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रो जो स्पेस रो जो लाइट स्पेक्ट्रम आछे ए सब स्पेक्ट्रम रे सेगुडा को एनालाइज करिया को ए टेलीस्कोप टा बनाइछि और एटा मोनाकिया रे काई बनाइछि एटा जानियार अछि कारण मोनाकिया ए जो जागाटा अछि एठी हमको क्लियर स्काइज देखिया को मिले क्लियर स्काइज हेले भलो विजिबिलिटी रहइबो भलो ट्रांसमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम हबो स्पेस रु आ हमें भल से ताको टारगेट करि परिबा ताको एसेस करि परिबा हैला तो सेइतमै एई जागा रे एई टेलीस्कोप टा बनाइछि 30 मीटर्स टेलीस्कोप टिके डिटेल पढिया को ट्राई करिया विषय नेक्स्ट होची with reference to Zika virus consider the following statement. It was first identified in Uganda in 1947. It occurs through the bite of infected Aedes mosquito, mainly Aedes aegypti. Which of the following statement given is are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो Zika virus विषय पचारे एटा तो कंटेम्परेरी अफेयर्स हो बहुत टाइम रू चली आछि न्यूज़ रे यार आंसर कोन हबो 8th क्वेश्चन हां 8th क्वेश्चन आंसर कोन 8th आंसर हाँ हाई एल्टीट्यूड भी आउ हाई हाई अल्टीट्यूड भी आउ क्लियर स्काइज भी हमको देखिया को मिले से खाली हाई अल्टीट्यूड में क्लियर स्काइज भी था ठीक 8 सी बोथ 1 एंड 2 जिका वायरस एडिस इजिप्टिक बाइट कले हुए आ गोटे मोर आ गोटे क्वेश्चन अछि ए मस्किटो बाइट कले आउ दीटा कोन डिजीज हुए के कहि परिबो बहुत कॉमन डिजीज आ बहुत थरो समस्या सुनी भी थिबे ए डिजीज विषय रे ए मस्किटो बाइट कले गोटे तो जिका वायरस ट्रांसमिट करे ए मस्किटो आउ कोन डिजीज ए मस्किटो बाइट कले हुए के कहि परिबो कमेंट सेक्शन में ट्राई करो आंसर करियो कॉमन डिजीज बहुत एडिस इजिप्टिक बाइट कले हुए हाँ सी करेक्ट 8 आंसर सी जिका वायरस यस करेक्ट डेंगू आउट अछि आ गोटे ट्राई करंतु गोटे तो डेंगू ठीक अच्छी आ गोटे हूँ चिकेन गुनिया है मन रखिए ट्राई करेंगे डायरेक्ट जब क्वेश्चन आसीगला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो एजिस एजिप्टी गोटे तो जानीदे जिका भाइरस आ गोटे डेंगू आ गोटे हूँ चिकेन गुनिया है नेक्स्ट Ninth, which one of the following statement is or are correct about the M. Davis platform launched by World Health Organization? A direct question, a fact based question, M. Davis platform launch by WHO. It is the world's first open access platform for medical device data. It attempts to simplify medical devices naming by using a single standardized naming scheme. Your answer कौन? 9. तो एटा बेसी टाइम में वेस्ट करबे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो यार आंसर हबो ए हैला इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस डाटा वेरियस कंट्रीज विषय शेयर करिया को ओपन गोटे प्लेटफॉर्म ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म बनाई छि बाय डब्ल्यूएचओ सिंपल सरला नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन नासा CHAPA project aims to stimulate a year-long mission to Mars to understand the challenges faced by astronauts on long duration space travel. First statement एटा NASA रो CHAPA project विषय Second statement होची the project also supports NASA's broader goals including the Artemis program. Which of the following statement given is or are correct? Option A 1 only, option 2, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. एटा न्यूज रे बहुत अछि CHAPA प्रोजेक्ट एटा के कहि परिबो yes correct chikungunya right yes correct 10 रा आंसर होची
तो ये प्रोजेक्ट कौन एक्चुअली प्रोजेक्ट होची नासा रो सीएचईए प्रोजेक्ट एटा कोठी करा जाउची ना अर्थ ऊपर ही करा जाउची हैला ना अर्थ ऊपर करा जाउची कौन पे करा जाउची ताकि प्रिपेयर करि परिबे हमर एस्ट्रोनॉट्स को हमर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को मार्स लाइक एनवायरनमेंट रे सर्वाइव करिया को आ सेठी फर्दर एक्सपेरिमेंट करिवा को तो सेही जिंसटा को हम स्टिमुलेट करछे अर्थ ऊपर तो एटा होची नासा रो सीएचईए प्रोजेक्ट तो एटा कोन करिवा आल्सो सपोर्ट्स नासास अदर प्रोजेक्ट्स नासा रो खाली अलगा प्रोजेक्ट्स भी चलजी फॉर एग्जांपल आर्टेमिस प्रोग्राम एबे मोर क्वेश्चन होची आर्टेमिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट के कहि परिबो कमेंट सेक्शन में आंसर दागो ट्राई करंतु करेक्ट 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 10 रो सी आंसर करेक्ट Artemis program is related to what खाली को celestial body related भी कहि दियन तो हे जिवो काम एटा तो बहुत पुराना प्रोग्राम आर्टेमिस प्रोग्राम बहुत टाइम रे न्यूज़ रे अछि ठीक अछि आर्टेमिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू मून हला मून रे एस्ट्रोनॉट्स माने जिबे सेठी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करबे इट इज रिलेटेड टू दैट नासा रो हला नेक्स्ट tirzepatide was seen in the news is primarily known as eta would a drug eta would a drug it was seen recently it is related to what artificial sweetener nano fertilizer anti diabetic drug आ गोटे डाए ए दिटा ए चारटा भितर कोटा डायरेक्ट क्वेश्चन एथरा कोन बुझियार अछि गोटे ड्रग रा तार ना इट इज रिलेटेड टू व्हाट आर आंसर होची एंटी डायबिटिक ड्रग हला एथरा बेसी टाइम वेस्ट करिवानी एटा गोटे ड्रग इट इज रिलेटेड टू डायबिटीज नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी EEG हला It can be used to help diagnose and monitor a number of conditions affecting the brain. It is one of the main tests to help diagnose epilepsy. Hela, it can epilepsy gote clinical condition. Hela, it can reveal the effects of anesthesia and sleeping patterns. All of the above. यार आंसर कौन होगा 12 आंसर इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी EEG 12 आंसर 12 आंसर यस करेक्ट 12 आंसर ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी कौन ना बहुत टाइम रे न्यूज रे भी देखिथिबे कि कोटी वीडियोस की फोटोज भी आस्तिबो ब्रेन रे गोटे कैप टाइप रो पिंधा जाए आउ सेटु बहुत सारा सेंसर्स लागि थाए हला ब्रेन माने स्कल ऊपर तो सेही सेंसर्स गुडा कोन करंती ना हम ब्रेन रे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माने इंपल्स गुडा अछि से गुडा को ट्रैक करंती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स कोडा आसे तो धरंतु एटा गोटे नर्व हला हला आ एटा आ गोटे नर्व हला दीटा नर्व हला तांको मझिरे कोन अछि सिनेप्स अछि तो एठु एठी कि से ट्रांसमिशन केमिति करिवे तो वेरियस चार्ज्ड आयन्स अछंती न्यूरोट्रांसमीटर अछंती जो माने कि इलेक्ट्रिक्स माने बहुत कम वोल्टेज रो इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स जनरेट करंती सेही इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स गुडा को ए इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी जो टेस्ट अछि सेही जिंसटा को ट्रैक करे ए जिंसटा को ट्रैक करे आ एनालाइज करे ब्रेन रो वेरियस कमांड जहाँ प्रोवाइड करा होची कि इंपल्स प्रोवाइड होची ए टेस्ट रे सेटा एनालिसिस करा जाय तो ऑब्वियसली एटा सब जाको देखंतु ब्रेन रिलेटेड कथा अछि हेल्प डायग्नोज एंड मॉनिटर अ नंबर ऑफ कंडीशन अफेक्टिंग ब्रेन ठीक ब्रेन रे जनरेट होची न्यूरल इंपल्स गुडा नेक्स्ट एपिलेप्सी एटा भी गोटे न्यूरल डिसऑर्डर हैला नेक्स्ट होची एनेस्थेसिया इफेक्ट कोठी हम सीएनएस ऊपर हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऊपर हुए तो तार इफेक्ट को भी एनालाइज करिया को स्लीपिंग पैटर्न को एनालाइज करिया को भी ए जिंसो ए टेस्ट टा यूज करा जाय हैला ने 12 आंसर ए नुए 12 आंसर बी ठीक तापर नेक्स्ट with reference to the Chandipura vesiculovirus consider the following statement एटा गोटे वायरस न्यूज रे अछि following statement दिया अछि ताको हमको देखियार अछि first it is an RNA virus belonging to the
Rhabdoviridae family, which also includes the rabies virus. It was first identified in 1965 in Chandipura, a village in Maharashtra. It occurs by the sting of vector infected sandfly. How many of the above statement is correct? तो कौन गोटे फैमिली देइची Rhabdoviridae फैमिली देइची RNA वायरस देइची सिमिलर टू रेबीज वायरस 1965 रे डिस्कवर कराइची चांदीपुरा रे एट महाराष्ट्र आउ वेक्टर देइची से सैंडफ्लाई ए भितरु को स्टेटमेंट गुडा करेक्ट 13 आंसर yes correct 13 ର आंसर होची all three correct 13 ର आंसर होची all three एटा सैंड फ्लाई देइची आ गोटे यार भी वेक्टर होची एडिस मस्किटो जोटा हम पूर्व पढ़थिले जिका वायरस डेंगू चिकनगुनिया एडिस इजिप्टी हला एडिस इजिप्टी भी ए जिंसटा को ट्रांसमिट करे हला सैंड फ्लाई भी अछि एडिस इजिप्टी भी अछि with reference to the nuclear fusion, which of the following statement is or are correct? It is a process in which two light atomic nuclei combine to form heavier nucleus. Nuclear fusion विषय पचारची हैला the process is the source which powers stars including the sun. Select the correct statement using the code given below. एटा तो easy question टा nuclear fusion विषय पचार दीटा statement देइची यार आंसर कोन होबो 14 रो हाँ 13 नो सी करेक्ट 14 आंसर कौन न्यूक्लियर फिजन विषय पचारची यार आंसर होची बोथ 1 एंड 2 एटा तो इजी क्वेश्चन थिला न्यूक्लियर फ्यूजन कोन हुए ना दीटा लाइटर पार्टिकल्स को कंबाइन करी गोटे हेवियर पार्टिकल बना जाए आउ सेटू एनर्जी जनरेट करा जाए एबे आपण मान को पढिबार अछि आईटीआर कोन ए जिंसटा कोन एथरे को कंट्रीज इन्वॉल्व अछंती आउ ए एटा गोटे एक्सपेरिमेंट हला को कंट्री इन्वॉल्व अछंती को लोकेशन रे करा जाउची इंडिया इन्वॉल्व अछि ना नाही आउ यारो मेन मैंडेट टा कोन पे एक्सपेरिमेंट टा परफॉर्म करा ए विषय रे आपन को पढिया रे आईटीआर हला आ गोटे न्यूज अछि चाइनास आर्टिफिशियल सन चाइना भी गोटे न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट करू जोथरे कि से एनर्जी जनरेट करू करिया को चेष्टा करू नॉर्मल एबे हमें न्यूक्लियर प्लांट रे हमें न्यूक्लियर फ्यूजन यूज करछे हला बट न्यूक्लियर फ्यूजन ने केमिति हमें एनर्जी जनरेट करि परिबा सेट में बहुत जगह एक्सपेरिमेंट करा जाउची एटा डिफिकल्ट कारण बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दरकार ए जिनसटा को परफॉर्म करिया को न्यूक्लियर फ्यूजन टा तो एटा एक्सपेरिमेंटल स्टेज रे अछि तो आपन को पढियार अछि आईटीआर कोन आउ चाइनाज आर्टिफिशियल सन कोन यार एग्जांपल सन रे न्यूक्लियर फ्यूजन होची ना ड्यूटेरियम गोटे अछि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम यूज कंबाइन करके हीलियम प्रोडक्शन होची एटा ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कोठी होची सन रे ड्यूटेरियम ट्रिटियम मिसी की हीलियम होची आउ बहुत सारा एनर्जी जनरेट होची हैला एटा गोटे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जोटा कि सन रे होची एटा तो एबे भी न्यूज रे चलची 15th number question ta with reference to the primary amoebic meningoencephalitis consider the following statement PAM हैला it is a rare but lethal central nervous system infection it is usually caused by an infection with Naegleria wolferi a microscopic amoebia commonly called as brain eating amoebia which of the statement given above is or correct यार आंसर दबा पूर्वरु मते फर्स्ट कोंतु को जगह रे एटा एबे रिसेंटली बहुत राइज करची आउ न्यूज रे बहुत आसुची लोकेशन इन इंडिया
को जगह रे कमेंट सेक्शन में आंसर हाँ आंसर को जीवा बट मोर क्वेश्चन होची कि को जगह रे एटा भी रिसेंटली देखा देइछ और यार नंबर बहुत माने गोटे स्पाइक रेट रे इंक्रीज करिछि अलार्मिंग सिचुएशन इंक्रीज करछि और नेशनल मीडिया को बहुत कवर करछु ने ठीक अछि आंसर को जीवा बट मते मोर लोकेशन रो आंसर हां ठीक करेक्ट केरला केरला रे यार बहुत ब्रेन इटिंग मैमो भी है यार बहुत अधिका ये अछि आंसर होछि यार बहुत एएनसी आउ किछि जिंस फैक्ट या विषय जान दबा एटा एंटर केमति करे बॉडी को बॉडी भीतर को एंटर केमति करे वाया नाजल रूट रे नाकर रूट रे ही अमोएबाटा एंटर करे हैला तापर ब्रेन रे जाए ब्रेन रे धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन करे आ तापर ब्रेन टिश्यूज को डैमेज करे आउ जो पेशेंट माने आसंती से माने कोन हिस्ट्री दियंती कि पास्ट किछि डेज 0 to 9 डेज भितरे से माने रिसेंटली कुटी वार्म फ्रेश वाटर रे आइदर बाथ बेदिंग करछनी नले जाइंकी डाइविंग करिछनी कि नले सेही वाटर रे जाइंकी यूज करिछनी से जिंसटा को माने जेमति कि गाधैछनी कि नले जाइंकी डीप डाइविंग करछनी से जगह रे से माने हिस्ट्री देबे एमति कि पास्ट 0 to 9 डेज माने 9 डेज भितरे से माने ए सब एक्टिविटीज परफॉर्म करछनी आ एमति सब सिम्पटम्स नै कि आसुछनी हला तो सेटू सस्पेक्ट करा जाय पीएम हेची ना नहीं हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट स्टेटमेंट होची ग्राफाइट इज अ सॉफ्ट मटेरियल ड्यू टू वीक van der Waals force between its layers स्टेटमेंट 2 होची द यूज ऑफ ग्राफाइट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज प्राइमरली ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज दीटा स्टेटमेंट ग्राफाइट विषय देइची से पचार विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट डी होची स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट यार आंसर कोन केते नंबर क्वेश्चन 16 16 आंसर यस करेक्ट एबे तो सब धीरे धीरे केसेस देखा गलानी बट केरला रे स्टार्टिंग रे बहुत देखा होतला केस ऑल इंडिया धीरे धीरे केसेस आसले करेक्ट 16 आंसर सिक्सटीन आंसर होची सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट ना बोथ करेक्ट नुहे स्टेटमेंट 2 रे टिके ट्विस्ट अछि कहू स्टेटमेंट 1 करेक्ट वीक van der Waals फोर्स ए जिंस पई ग्राफाइट दीटा लेयर भितरे ग्राफाइट रो दीटा लेयर भितरे वीक van der Waals फोर्स थाए जोति पई कि सेटा बहुत स्लिपरी थाए आउ जेहेतु से फोर्सटा बहुत वीक थाए सेटा स्लिपरी थाए और फ्रिक्शन बहुत कम हुए तो ग्राफाइट एमती जगह रे भी यूज करा जाय जोठी हमको फ्रिक्शन टा को रिड्यूस करबार थाए हैला बिकॉज़ दीटा लेयर भितरे तांकर van der Waals फोर्स वीक अछि से माने गोटे गोटे लेयर ऊपर आराम से स्लाइड करि परिबे हैला सेकंड ऑप्शन टा कोन देछि इट ग्राफाइट इज न्यूक्लियर ठीक ग्राफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स primarily due to excellent heat resistant properties ना it is used as a moderator ठीक अछि मॉडरेटर पई यूज करा जाय हैला मॉडरेटर माने कोन ना जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स अछंती तांको स्पीड टाको गोटे मॉडरेट करबा जदि बहुत स्पीड रे न्यूट्रॉन्स माने मूव करिवे जो चेन रिएक्शन होची हमर न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर जो ये रिएक्शन होची न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होची सेटा एते स्पीड होबो जे हमें ताको कंट्रोल करि परिबन जदि न्यूट्रॉन स्पीड टा हमें कंट्रोल करिबन तो सेही थरे ग्राफाइट यूज करा जाय एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर ये गुडा अछि प्रोटॉन्स की न्यूक्लियर पार्टिकल्स गुडा अछि तार स्पीड टा को मॉडरेट करबा हैला ताकि चेन रिएक्शन टा सस्टेन करि परिबो आउट ऑफ कंट्रोल होबन Next, 17. The term tinjaparin was recently seen in the news. Drug ta hai gote eta in the news. It is a drug commonly used to
यार आंसर डायरेक्ट यार बुझेबारे कौन अछि यार आंसर होची प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स हला जो स्पिटिंग कोबरा वेनमस कोबरा बाइट जो हुए माने जतले वेनम इंजेक्ट करे कोबरा तो सेते बेले कोन हुए ना हम बॉडी रे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए ब्लड वेसल्स रे हला तो सेटा को प्रिवेंट करिया को ए ड्रग्स टा यूज करा जाए हला नेक्स्ट with reference to the TB which of the following statement is or are correct the disease is caused by a bacteria called mycobacterium tuberculosis Taପରେ next, it spreads through the air when infected people cough, sneeze or spit. Select the correct answer using the code given below. TB तो ଏବେ ମାନେ national policy रे भी बहुत important role play କରୁଛି various government institutions रे various steps निया होची TB ର burden कम करियो काहे ना इंडिया one of the highest TB burden इंडिया रे होची यार आंसर कोन 18 रो एटा इजी क्वेश्चन टा yes 17 रो भी 18 yes correct 18 सी इजी क्वेश्चन एटा एथरे कोन बुझार अछि टीबी विषय रे बेसिक फैक्ट्स गुडा देछि हैला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट सब बेले एग्जाम रे एई जिंसटा फर्स्ट सर्कल कर दबो कि अंडरलाइन कर दबो नॉट करेक्ट देछि कि नॉट करेक्ट देछि नो बहुत टाइम ऑपोजिट आमे मार दे के आसु इजी क्वेश्चन भूल हे एटा होछि सिली मिस्टेक हैला First option होची not correct पचारची. It was first discovered in Denmark in 1958. It doesn't spread from person to person. C होची it can cause a painful rash, enlarged lymph nodes and fever. Option D होची none of the above. 19 रा आंसर कौन not correct पचारची. 19 रा आंसर करेक्ट 18 सी 19 रा आंसर এটা টিকে ডিলে রে চালছে বোধে লাইভ স্ট্রিমটা ঠিক আছে টিকে ওয়েট করদবা 19 ର आंसर एमपॉक्स এটা তো বহুত নিউজ রে ଅଛି ଏବେ ବି ଅଛି ଆଗକୁ ବି ରହିବ बिकॉज यार ଚାଲଛି ବହୁତ ସାରା କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ର ଚାଲଛି एमपॉक्स ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ करेक्ट नॉट करेक्ट पचारची तो ये स्टेटमेंट टा भूल डजंट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट रे स्प्रेड हुए एटा पर्सन टू पर्सन हैला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कीटामाइन एटा भी आउट ड्रग ड्रग क्वेश्चन डायरेक्टली काम कौन सरला आउ हमको मेकानिज्म एक्शन एते डिटेल जानिबार भी नाही A drug traditionally used as an anesthetic has shown potential as a treatment for ketamine एटा गोटे माने ये anesthetic drug टा गोटे हैला anesthesia भलिया यूज करा जाय सेटा एबे कोन पई पोटेंशियल देखा देछि को अलगा ट्रीटमेंट करि परिबो को अलगा डिजीज ट्रीटमेंट करियो ऑप्शन होछि क्रोनिक पेन सिंड्रोम सिजोफ्रेनिया ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन अल्जाइमर्स डिजीज यार आंसर मु कहि दोछि डायरेक्ट यार आंसर होछि ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट डिप्रेशन माने जो ड्रग रेजिस्टेंट डिप्रेशन थाउछि ताकू ट्रीट करिया को एटा गोटे पोटेंशियल ड्रग भलिया यूज करियार स्टार्ट करा जाउछि कि डॉक्टर्स माने देखुछन याकू यार एफिकेसी चेक करछन हैला नेक्स्ट सही समान सही क्वेश्चन रे आउट ड्रग भी देछि टर्म्स लाइक कीटामाइन टर्म्स गुडा ही मोस्टली पचार देबे एग्जाम रे एटा टर्म कोन एटा ड्रग की आउ कोन नले एटा कोन पे यूज करा जाउछि ए टाइप रो क्वेश्चन कीटामाइन esketamine and or ketalar sometimes appeared in the news is in the context of देखिले एटा ऑलरेडी ऊपर खाली ना गुडा खाली टिके देखि तो हला जोटी एग्जाम रे आसला ए टर्म गुडा जदी आसीबो जानिथिबो कि एटा एंटी डिप्रेशन ड्रग्स टाइप रो यूज करियार पोटेंशियल देखा देछि नेक्स्ट recently the outbreak of listeria which can contaminate food have been appeared sometimes in news is caused by यार आंसर किए दे परिबो लिस्टेरिया एटा भी न्यूज रे अछि लिस्टेरिया टा कोन गोटे बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगाई लिस्टेरिया 22
यस 21 रो बी देखिले तो एटा सही समान क्वेश्चन 22 रो आंसर कोन यस करेक्ट ना 22 डी के कहछनी ना डी नुए एटा होछ गोटे बैक्टीरिया हैला बैक्टीरिया एटा लिस्टेरिया गोटे बैक्टीरिया एटा कंटामिनेटेड फूड रे स्प्रेड हुए अलगा वाटर रे भी स्प्रेड हे परिबो हैला आउ यार सिम्पटम्स कोन क्रैम्प्स हबो फीवर हबो वोमिटिंग हबो हैला ए सब सिम्पटम्स देखेबो एटा होछ गोटे लिस्टेरिया गोटे बैक्टीरियल डिजीज हैला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 23 with reference to the nisar satellite which of the following statement is or are correct. It is jointly developed by the NASA. It is jointly developed by NASA and ISRO. It will be launched into a polar sun synchronous dawn-dusk orbit. Select the correct option. One only, two only, both one and two, neither one nor two. निसार प्रोजेक्ट विषय एटा तो कंटेम्परेरी अफेयर्स कहै गले बहुत टाइम एरा न्यूज रे अछि यार आंसर कोन 23 रो करेक्ट तो इजी क्वेश्चन टा 23 रो सी बोथ फाइन एंड सो निसार कोन ना नासा और इसरो कोलैबोरेट करिके एटा बनै छनी हैला आउ यार काम कोन यार काम होची कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज वाटर स्ट्रेस माने रिलेटेड जा इश्यूज देखा जाउची आ तापरे रिसोर्सेस मिस यूटिलाइजेशन को जगह रे रिसोर्सेस अछि कोन रिसोर्सेस अछि ए सब जिंस फाइंड करिया को ए सैटेलाइट टा लॉन्च करा जाईची बाय बोथ कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड इसरो एक्सक्यूज मी नेक्स्ट होची ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप इज प्राइमरली यूज्ड फॉर ऑप्शन होची स्टडिंग डिस्टेंट गैलेक्सीज ऑप्शन बी होची ऑब्जर्विंग द सन ऑप्शन सी होची स्टडिंग सेलेस्टियल ट्रांजिएंट इवेंट्स ऑप्शन डी होची एनालाइजिंग ब्लैक होल तो एटा टेलीस्कोप ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप यार आंसर कोन डायरेक्ट क्वेश्चन एथरे कोन बुझियार अछि either you know or you don't know जदि जानि न देन मन रखिया को ट्राई करिवो 24 yes correct 23 रो सी 24 रो growth india telescope yes correct studying celestial transient events हैला सैटेलाइट स्टडी करिया को celestial transient events को तापरे नेक्स्ट 25 नासा's perseverance rover recently found a चियावा फॉल्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटा कोन ए जिंसडा कोन मते के कहि परिबो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची कु जगह रे देख ए जिंसडा से फाइंड करछि नासा रो परसिवियरेंस रोवर टा अछि से कु जगह रे ए चियावा फॉल्स फाइंड करिछि और चियावा फॉल्स टा कोन ए दीटा क्वेश्चन आंसर म दरकार 25 ର आंसर दीटा क्वेश्चन चियावा फॉल्स जोटा परसिवियरेंस रोवर फाइंड करछि से जिंसटा कोन आ कु जगह रे कु सेलेस्टियल बॉडी की कु प्लैनेट रे से फाइंड करछि करेक्ट परफेक्ट आंसर मार्स रे फाइंड करछ एटा गोटे रॉक फॉल्स लागुची बोली कंफ्यूज कर जीवनी एटा होची गोटे रॉक से रॉक टा गोटे चियावा फॉल्स होची गोटे वाटरफॉल हला जोटा ग्रैंड कैन्यन रे अछि ग्रैंड कैन्यन जो नॉर्थ अमेरिका रे जो अछि सेठी गोटे फॉल अछि चियावा फॉल्स हला तो सेही फॉल ना रे दिया हिची से रॉक रो ना जोटा कि मार्स रे फाइंड करा हिची हला नेक्स्ट which of the following statement is or are correct regarding pumped storage plants question eta hoji pumped storage plant related kuku statement correct option 1 hoji pumped storage plants use the principle of gravity to generate electricity second hoji the system involves two water reservoirs at different elevations which generate power when water moves from higher reservoir to lower one through a turbine
ऑप्शन 3 होची power is also required to pump water back into the upper reservoir. Select the correct option. अथर हम क्वेश्चन देखै दउची pumped storage plant विषय से पचारची जिनसटा कोन पचारची फर्स्ट ऑप्शन होची pump storage plant use the principle of gravity to generate electricity. Second होची the system involves two water reservoirs at different elevations which generate power. When water moves from the higher reservoir to the one through a turbine. Third hochi power is also required to pump water back into the upper reservoir. Select the correct answer using the codes given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3 तीन ए भितर कोटा करेक्ट 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 26 रो डी तो ये जिनसटा कोन ना वाटर रिजर्वायर ग्रेविटी यूज करिकी आमे एटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गोटे रिजर्वायर गोटे हायर हाइट रे अछि आ गोटे रिजर्वायर गोटे लोअर हाइट रे अछि तो एटी वाटर हाई प्रेशर रे अछि तो आमे वाटर टाको जते बेले लो रिजर्वायर को नबा तो ऑब्वियसली ग्रेविटी एक्ट करिवो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हि जिवो वाटर टा जते मूव करूची तो सेही जगह जते टरबाइन प्लेस कर दबा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिवो तो एठो जते वाटर हमको एम्प्टी हेई चलिवो तो फर्दर हम एटी जो वाटर टा डिपोजिट ताको हम फर्दर मूव करिया को पड़िवो एक्सक्यूज मी तो सेही से देइची कि थर्ड स्टेटमेंट से देइची power is also required to pump water back into the upper reservoir तो हमें via power motor यूज करी वाटर फर्दर हमें एठू नबा पुनी तापर साइकिल चलिबो तो सेमती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा जिवो हला 27 with reference to that already देखिचे with reference to the Chandipura virus consider the following statement. It is a member of Rhabdoviridae family known to cause outbreaks during the monsoon season. It is transmitted by vectors such as sandflies and ticks. It affects mostly children under 15 years of age. এটা कर देइछे এটা सरले पार्ट 2 सरीबो तापर 3 मिनिट्स ब्रेक देन पार्ट 3 को जिबा बिकॉज़ एटा छोटो थिला 3 मिनिट्स ब्रेक 3 to 4 मिनिट्स ब्रेक लास्ट क्वेश्चन आंसर कोन 27 रो एटा ऑलरेडी पढि सारछे करेक्ट करेक्ट 26 जी 27 रो करेक्ट 27 डी हला तो एबे केतरा टाइम हला 12:48 हला हमें 12:52 कि 52 नहीं 53 बेलू को स्टार्ट करवा 12:53 पार्ट 3 हला ट्राई करवा जो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करिया को 12:53 लास्ट स्टार्ट हो हला
वेलकम एवरीवन स्टार्ट करिवा ओके ये टाइम यस राइट स्टार्ट करिए Part 3 ର first question होची consider the following statements. A virus is an infectious microbe consisting of a segment of nucleic acid surrounded by a protein coat called capsid. Virus structure विषय statement गोटे एटा. Virus are considered living organisms because they carry out metabolic processes on their own. Simple question NCERT रो question एटा हैला direct statements गुडा NCERT रे मिलिबो. Which of the following statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. यार आंसर कौन? Part 3 रो first. ट्राई करो आंसर करिया को Part 3 रो first टा. तो वन आंसर होची ए कौन पाई एटा तो बेसिक स्ट्रक्चर और एटा वायरस आर नॉट कंसीडर्ड लिविंग दे आर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग दे आर एसेलुलर हैला they don't carry out their metabolic activities on their own माने they have to depend on some host for their reproduction for their metabolic activities सेमान को गोटे होस्ट ऊपर डिपेंड होवा को पड़िबो हैला तो इंडिपेंडेंटली सेमाने करि परिबेनी सिंपल क्वेश्चन थिला एटा which one of the following countries introduced the world's first nationwide program to treat peanut allergies in children एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ एथरे कोन बुझार अछि peanut allergy होची गोटे कंट्री रे से कंट्री रे प्रोग्राम लॉन्च करा हैछि तो तारा यार आंसर कोन टूर आंसर डायरेक्ट एटा मु कहि दोची टूर आंसर होची ऑस्ट्रेलिया सेठी पीनट एलर्जीज बहुत देखा जाउची छोट पिलांग भितरे तो सेटा नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च करा हैछि नेक्स्ट एटा भी एनसीईआरटी रे मिलिबो विथ रेफरेंस टू द न्यूक्लियोटाइड्स which of the following statement is or are correct nucleotides are building blocks of DNA and RNA each nucleotide in DNA has one or four nucleobases which is adenosine thymine guanine and cytosine हैला select the correct answer using the code given below nucleotide रो structure विषय रे क्वेश्चन अछि दीटा स्टेटमेंट दिया हैछि ए दीटा होछि स्टेटमेंट ऑप्शन होछि वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉर टू ए भितरु कोटा ठीक थ्री रा आंसर यस यस टू रा करेक्ट टू रा हां टू रा ऑस्ट्रेलिया करेक्ट थ्री रा आंसर कोन थ्री रा आंसर यस थ्री रा आंसर होची सी तो कौन एटा न्यूक्लियोटाइड डीएनए रो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैला तो न्यूक्लियोटाइड्स रे कौन कौन जिंस थाए गोटे न्यूक्लियो बेस थाए न्यूक्लियो बेस हैला आ गोटे फॉस्फेट ग्रुप थाए तीनटा जिंस थाए फॉस्फेट ग्रुप आ गोटे सुगर हैला न्यूक्लियो बेस रे कौन जाए ए जिंस गुडा एडिनोसाइन थायमाइन गुआनाइन साइटोसाइन तो adenosine always linked to thymine by triple hydrogen bonds. Simply guanine is linked to cytosine by double hydrogen bonds.
है ATGC ए तीनटा जिनस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड टा कोन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हमर जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो कि आरएनए हो है तीनटा जिनस थाए न्यूक्लियोटाइड रे न्यूक्लियोबेस फॉस्फेट सुगर with reference to the CRISPR-Cas9 which of the following statement is or are correct it is a tool to edit parts of the genome by removing adding or altering sections of the DNA sequence Cas9 acts like a pair of molecular scissors capable of cutting strands of DNA. Select the correct answer using the code given below. एटा तो कंटेम्पररी अफेयर्स बहुत टाइम रे जीन थेरेपी रे न्यूज रे रहउची क्रिस्पर Cas9 ए टेक्निक टा बहुत टाइम रे न्यूज रे रहउची ए भितरो आंसर कोटा करेक्ट It is a tool to edit parts of the genome by removing, adding, altering sections of the DNA and sequence. Cas9 acts like a pair of molecular scissors capable of cutting strands of DNA. Select the correct answer. One only, two only, both one and two, neither one nor two. Answer 4 रो 4 रो आंसर कौन करेक्ट 4 आंसर होची सी बोथ 1 एंड 2 हला मु बेसिक जिंस कहि दोची क्रिस्पर Cas9 रे कोन हुए क्रिस्पर Cas9 रे एटा गोटे जीन एडिटिंग टूल हला एथरे दीटा मॉलिक्यूल थाए टू मॉलिक्यूल्स थाए गोटे मॉलिक्यूल होची जीआरएनए होची गाइडेड आरएनए जी माने गाइडेड हला आ गोटे होची Cas9 दीटा मॉलिक्यूल थाए जिंस रे गाइड आरएनए रो काम कोन ना हम एटा जदी गोटे कोटी करिवे एटा जदी गोटे डीएनए एटा जदी गोटे डीएनए अछि डीएनए रे हमको एई पर्टिकुलर जगह रे हम कट करिवार अछि कि हम किछि जिंस एटु रिमूव करिवार अछि कि ऐड करिवार अछि तो एई जगह टु हमको पहुंचबो केमिति वाया गाइड आरएनए कोन करिवो ना एई जगह रे जांगी स्पेसिफिकली बाइंड करिकि एई जगह टु अनवाइंड करिवो तापर नेक्स्ट आछुची Cas9 को कोन कह जाउची ना मॉलिक्यूलर सीजर जेतेबेले गाइड आरएनए जांगी एई जगह टाको लोकेट करि दबो देन Cas9 जाय कि कोन करिवो सेई जगह टाको कट करिवो हैला कट करिवो देन साइंटिस्ट माने जहाँ तांकर रिक्वायरमेंट थो आइदर किछि नुवा जिंस ऐड करिवे कि किछि जिंस रिमूव करिवे पर्टिकुलर जीन को रिमूव करिवे तो सेई सब जिंस फर्दर प्रोसीड करि हबो हैला तो ए क्रिस्पर Cas9 दीटा मॉलिक्यूल थाउची गोटे गाइड आरएनए आ गोटे Cas9 टाको अदरवाइज एके आल्सो नोन एज कोन मॉलिक्यूलर सीजर काहे कि ना एटा कट करछि ए पार्ट रे ठीक अछि नेक्स्ट एटा गोटे टर्म kindlings the term kindlings sometimes appeared in the news is in the context of कोन फुट माउथ डिजीज जोटा कि देखा जाउछ मोस्टली कुथरे कैटल्स मानको भितरे तापर नेक्स्ट होची एन्सेफेलाइटिस सी होची ट्यूबरकुलोसिस डी होची कैंसर यार आंसर कोन किडलिंग्स टा मोस्टली न्यूज रे आसुची को रिलेटेड को जिंस पई ए टर्म टा मोस्टली न्यूज रे आसुची ए चारटा भितरु 5 रा आंसर करेक्ट 5 रा आंसर होची डी कैंसर मोस्टली किडलिंग्स ना किडलिंग्स होची गोटे प्रोटीन जोटा कि आम बॉडी रे किछि मेकानो कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट जहाँ भी पड़ुची कि किछि सेंसेस होची से गुडा ट्रांसमिट करची बॉडी भितरे गोटे ट्रांसमिटर टाइप रो कहया को गले चलिबो जोटा गोटे प्रोटीन तो किडलिंग्स होची गोटे ट्रांसमिटर आ गोटे प्रोटीन जोटा कि वेरियस एनवायरमेंटल स्टिमुलस गुडा को हम बॉडी भितरे ट्रांसमिट करिया को वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसमिट करिया को हेल्प करे हला सेति के सिंपल रे बुझले हबो कैंसर रिसर्च रे जिनसटर इंपोर्टेंस टा फाइंड करा है ने रिसेंटली नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टैंटलम कोन it is a ductile metal with a high melting point tantalum is highly reactive with acids it is used in the manufacture of surgical implants and electronic capacitors tantalum कोन जिनसटा कोन ता प्रॉपर्टीज गुडा दिया है ए भितरु कोटा करेक्ट आंसर 1 and 2 1 and 3 only 2 and 3 only 1 2 3
सी सी ର आंसर कोन करेक्ट सी ର आंसर होची बी ए जिनसटा फर्स्ट और थर्ड टा तो ठीक अछि जणा पड़ला हाईली रिएक्टिव नुहे दे आर वेरी मच कोरोसिव रेजिस्टेंट एंड एसिड संगे से माने एक्टिवली रिएक्ट करन देनी हला तो ई स्टेटमेंट टा भूल नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एटा नैनो टेक्नोलॉजी रे बहुत टाइम रे पढ़ा जाए ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज और आर करेक्ट it is the generation of an electric charge when two materials come into contact and are then separated hela then hoji triboelectric series ranks materials based on their tendency to gain or lose electrons during contact select the correct answer triboelectric effect विषय से पचारची दीटा प्रॉपर्टीज देइची ए दीटा भितरु करेक्ट आंसर कोडा one only both 1 and 2 two only neither 1 nor 2 7 आंसर कहि दोची 7 आंसर होची सी बोथ 1 and 2 ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कोन ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होची दीटा डिसिमिलर पार्टिकल्स अछंती पार्टिकल्स की सब्सटेंस अछंती जो माने जेतलो फ्रिक्शनल कांटेक्ट रे आसीबे दियन जाक दि जनक संगे रे देन इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हबो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हबो सेटा को कहआ जाय ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाइब्रेशन हैला कि किछि जिंस कांटेक्ट रे आसला कि फ्रिक्शन हैला और सेही थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हबो सेटा को कहआ जाय ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नैनो पार्टिकल्स रे ए प्रॉपर्टीज ता देखा जाए ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होची माने कोन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होतबो हैला सिंपल क्वेश्चन एथरे कोन एथरे किछि बुझार नै डायरेक्ट क्वेश्चन पढुची व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर्स इन डेली लाइफ कार ब्रेक्स वेदर प्रेडिक्शंस वैक्यूम क्लीनर्स प्रेशर कुकर्स प्रेशर रो यूटिलाइजेशन को जगह रे होची चारटा ऑप्शन भितरे ऑप्शन हो 1 2 3 2 3 4 1 and 3 1 2 3 4 यार आंसर कोन जल्दी जल्दी यार आंसर बहुत जल्दी दरकार एथरे किछि भाबियारी नै 8 रो हाँ एग्जाम रे बहुत पार्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोची एबे तो हमें क्वेश्चन डिस्कस करछो जोडा कि करंट अफेयर रिलेटेड अछि माने जोडा पास्ट ईयर रे करंट अफेयर रिलेटेड अछि और रिवीजन पे आपण मन को दरकार मु इंपोर्टेंट जिंस गोडा कहि दोची बेसिक कांसेप्ट गोडा बुझे दोची हैला बट ए सब जिंस करंट अफेयर न्यूज रे थिला करेक्ट द सिंपल क्वेश्चन 8 रे सब जगह प्रेशर यूज होची कुठी यूज होनी नेक्स्ट with reference to the lymphatic filariasis consider the following statement एटा गोटे डिजीज lymphatic filariasis याकु अलगा ना कोन elephantiasis हैला it is a serious debilitating disease caused by parasitic worms known as filarial worms it is a priority disease that is targeted for elimination by 2025 in India हैला दीटा जिंस से पचारची फाइलेरियल वर्म्स कॉज करछनी ना नाही आउ टारगेट केबे करा हिची 2025 इन इंडिया एटा ठीक ना नाही दीटा स्टेटमेंट ठीक ना नाही आंसर कोन करेक्ट आंसर फाइंड करो 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 nor 2 क्वेश्चन नंबर 9 एटा नाइन आंसर no both are not correct एटा 2025 नो 2027 2027 हैला आ गोटे जिंस मन रखता लिम्फेटिक फाइलारिसिस एटा जो पैरासाइट कॉज करे सेटा को कैरी किए करे ना क्यूलेक्स मस्किटो हैला हमें एडिस इजिप्टी पढ़िथिले एटा को कैरी करे क्यूलेक्स मस्किटो मलेरिया को किए कैरी करे
एते सारा जिनस तो पढ़िले एते मस्किटो विषय तो मलेरिया को किए कैरी करे कमेंट सेक्शन आंसर करने को ट्राई करो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया जे कॉज करे ताकू किए कैरी करे को मस्किटो कमेंट सेक्शन आंसर करने को ट्राई करो जल्दी मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो पैरासाइट टा जोटा कॉज करे मलेरिया ताकू को मस्किटो कैरी करे आमे केते सारा मस्किटो विषय पढ़ी सारले क्यूलेक्स मस्किटो बे देखिले पूर्वरु एडिस इजिप्टी विषय पढ़ी डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया जल्दी एटा तो बहुत कॉमन क्वेश्चन मलेरिया इज कैरिड बाय व्हिच मस्किटो जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करे ट्राई करो जे भी जानछो ट्राई करो आंसर करे भूल हो किछ असुविधा नहीं ठीक अच्छे मु कहि दउची फीमेल मलेरिया जोटा कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम कॉज करे सेम पैरासाइटा को कैरी करे फीमेल एनोफिलिस हैला फीमेल एनोफिलिस मस्किटो एटा गोटे मस्किटो फीमेल एनोफिलिस करेक्ट करेक्ट एनोफिलिस मस्किटो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 9 सरला 10 mpox एटा तो पूर्व ऑलरेडी देखी छे फिर भी आउथर देखि दबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू mpox इट इज कॉज्ड बाय सेगमेंटेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस दैट इज पार्ट ऑफ जीनस orthobunerea virus it cannot be transmitted from person to person it was first recognized in 1999 during an outbreak among the farmers in Malaysia which of the following statement above are not correct माने भूल स्टेटमेंट हमको फाइंड करियर अछि 1 and 2 1 and 3 only 2 and 3 only 1 2 3 10 रो आंसर कोन आंसर 10 रो डी करेक्ट आंसर होची डी सब जगह स्टेटमेंट भूल जीनस ऑर्थोब्यूनो वायरस नो ऑर्थोपॉक्स वायरस हला और एटा तो पढ़ी दिले इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हला इट कैन नॉट लिखि जे तो एटा भूल तब नेक्स्ट रिकॉग्नाइज इन 99 ड्यूरिंग एन आउटब्रेक अमंग द फार्मर्स फर्स्ट टाइम देखा जाइतला डेनमार्क रे हला तो मलेशियन में डेनमार्क रे तो सब जगह स्टेटमेंट भूल EOS 8 mission recently seen in the news is launched by direct question आ एथरे कोन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिया हिची रशिया रो दिया हिची जापान रो दिया हिची नासा यूएसए इसरो इंडिया के लॉन्च करछ एटा EOS 8 मिशन एटा मोस्टली जो स्पेस रे जो सैटेलाइट अछंती तांको अपग्रेडेशन पई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पई ए मिशन टा लॉन्च करा हिची बाय हुम 11 आंसर मु कहि दोची इसरो हैला डायरेक्ट क्वेश्चन एटा which of the following statement is correct regarding californium the new element find karaichi हैला it is a silvery white synthetic radioactive metal the element is named after the state of California it is very strong neutron emitter and is used in portable metal detectors for identifying gold and silver ores
गोटे नुआ एलिमेंट कि मेटल कहले हम डिस्कवर कराई तो तार प्रॉपर्टीज किछि दिया है एथुरु कौन कौन सब तार प्रॉपर्टी करेक्ट ऑप्शन डी होची ऑल ऑफ दी अबव यार आंसर कौन कैलिफोर्नियम विषय पचार से डायरेक्ट क्वेश्चन जदि जणा थिबो जदि जणा नहीं जणा नहीं एटा न्यूज रे थिला कैलिफोर्नियम टा मु कहि दोची यार आंसर होची ऑल ए सब जाक प्रॉपर्टीज देइची जोटा करेक्ट हैला गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एटा आ कैलिफोर्निया ना रे ही दिया है कैलिफोर्नियम आ पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर्स रे यूज करा जाय बेसिक प्रॉपर्टीज गुडा जानि थाओ कैलिफोर्नियम एबे एटा देखिबा बीपाम रेजिम recently seen in the news is related to which of the following disease एटा गोटे ट्रीटमेंट रेजिम टा एटा is related to which disease पोलियो चांदीपुरा भाइरस ट्यूबरकुलोसिस एमपॉक्स यार आंसर कौन क्वेश्चन नंबर 13 आंसर 13 रो आंसर करेक्ट 13 आंसर होची ट्यूबरकुलोसिस रो ट्रीटमेंट यार ना रे अछि बेडालेमिन तापर लिनेजोलिड मॉक्सिफ्लोक्सासिन एगुडा सब ड्रग्स हैला से ड्रग्स रे ना रे ही ए रेजिम टा बना हैची हैला लिनेजोलिड अछि मॉक्सिफ्लोक्सासिन अछि हैला बिडेक्विलिन अछि हैला तो यार एडवांटेज कोन ना ट्रेडिशनल ट्यूबरकुलोसिस रो जो ट्रीटमेंट चलथला ता ऊपर यार एडवांटेज कोन ना ए रेजिम टा होची 6 मंथ्स रो ट्रेडिशनल जोटा थिला सेटा मोर टाइम नोथला 12 नोथला 24 मंथ्स होतला तो तार टाइम टेकिंग बहुत थिला तो तार साइड इफेक्ट्स भी अधिका टाइम पर्यंत रहउतला बट एटा क्विक ट्रीटमेंट और जल्दी ट्रीटमेंट करी होबो ट्रेडिशनल जो ड्रग यूज करा होतला ट्यूबरकुलोसिस पे सेटा होची रिफाम्पिसिन एबे बहुत टीबी पेशेंट माने रिफाम्पिसिन को रेजिस्टेंट हे गलनी तो से रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करिया को ए बीपाम रेजिम टा अणा हेची जोटा कि शॉर्ट ड्यूरेशन और मोर इफेक्टिव हैला ए बेसिक फैक्ट्स गुडा जानिया को ट्राई करो काने टीबी एबे बहुत न्यूज रे अछि नेक्स्ट with reference to the planet Mars which of the following statement is or are correct it is the fourth planet from the sun and also known as red planet it has very thin atmosphere made of carbon dioxide nitrogen and argon select the correct answer using the code given below यार आंसर कौन 14 रो इजी क्वेश्चन एटा करेक्ट एथरा किछ बुझारे नै 14 रो सी आंसर बेसिक ज्योग्राफी बुक रो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द हेफ्लिक लिमिट एटा भी न्यूज रे थिला एक टर्म रिलेटेड क्वेश्चन गुडा मोस्टली आसे डायरेक्ट टर्म पचार देबे रिलेटेड टू व्हाट हेफ्लिक लिमिट it is the maximum number of times a normal human cell population will divide before entering the senescence it is the theoretical maximum lifespan of a human being it is the average number of cell division a cancer cell undergoes before becoming immortal it is the point at which telomerase becomes critically short leading to cell death यार आंसर कौन 15 आंसर कौन हेफ्लिक लिमिट कौन 15 आंसर करेक्ट 15 आंसर होची ए हैला हेफ्लिक लिमिट मु कहि दोची कोन ना हेफ्लिक लिमिट होची हम सेल गोटे पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करि परिबो हैला काहे कि ना हमर जो डीएनए अछि सेथरे टेलोमेरेज प्रेजेंट अछि से टेलोमेरेज ता डिटरमाइन करे हम सेल ता केते टाइम डिवाइड करबो एमति तो नै कि हम सेल ता अनलिमिटेड टाइम ऑफ डिवाइड कर चलथो जते थरो इंजर होथबो कि नुवा सेल दरकार होतो डिवाइड कर चलियो जे सेमिति होंता हमें कोन अमर ही जानते इमोर्टल ही जानते बट दिस इज नॉट ट्रू वी हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन एंड तापर हमर डेथ हुए सेटा कोन पई ना हेफ्लिक लिमिट पई माने पर्टिकुलर
नंबर ऑफ टाइम्स आम सेलटा पर्टिकुलर सेलटा डिवाइड कर परियो सेटा हमर डिटरमाइन केमिति होची ना टेलोमेरेज जो अच्छे डीएनए रे सेटा हमर डिटरमाइन करूची हैला टेलोमेरेज धीरे धीरे विथ एज विथ टाइम शॉर्ट हे चले तो से डिटरमाइन करा जाए कि ओके हेप्लिक लिमिट आसीगला सेल आमर डिवाइड कर परिबो तो धीरे धीरे आम सेनेसेंस को मूव करू देन डेथ हुए बट कैंसर रे कौन हुए ना से हेफ्लिक लिमिट टा वायलेट हो जाए तो हेफ्लिक लिमिट टा फॉलो हुए तो सेल टा कौन हुए ना माने गोटे रैपिड रेट रे ग्रोथ करे तार लिमिट न थाए केते टाइम से ग्रो करिवो केते टाइम रे सेल डिवीजन करिवो तार ऊपर किछि गोटे रोक न थाए कि किछि गोटे ब्रेक न थाए से ओनली बहुत स्पीड रे डिवाइड करे सेइत पे ताकू कोआ जाय कैंसर आ हेफ्लिक लिमिट टा कैंसर सेल रे वायलेट हो जाए सेल रो ग्रोथ टा अनकंट्रोल हो जाए हला एई किछरा जिंस हेफ्लिक लिमिट विषय जानि था तारे नेक्स्ट which of the following statement regarding terahertz radiation is not correct terahertz gote radiation अछि not correct पचारछि terahertz radiation lies in the electromagnetic spectrum between microwave and infrared radiation भूल स्टेटमेंट ना मु काढियार अछि not correct terahertz waves are ionizing radiations capable of removing electrons from atoms or molecules terahertz technology finds application in fields such as space communication security screening and medical imaging यार आंसर कौन terahertz क्वेश्चन नंबर 16 16 आंसर मु कहि दोची स्पीड रे जिबार अछि हमको 16 आंसर होची बी एटा भूल स्टेटमेंट से पचारछि नॉट करेक्ट ना भूल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट अ आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हैला ए गोटे जिंस पे स्टेटमेंट टा भूल गेला बाकी दीटा करेक्ट अछि काहे ना नो जदि आयोनाइजिंग रेडिएशन होबो ताले मेडिकल इमेजिंग रे केमिति यूज करिवो मेडिकल इमेजिंग आमे जहां भी किछि डायग्नोस्टिक पे जाउछु जदि सेटा आयोनाइजिंग रेडिएशन गुडा हम बॉडी रे पकेबे देन कैंसर कॉजिंग माने प्रोबेबिलिटी बढ़ी जिवो तो सेटा नॉन आयोनाइजिंग हैला which of the following statement is are correct regarding antimatter matter antimatter हैला particle physics antimatter particles have the same mass as their matter counterparts but possess opposite electric charge a positron is the antiparticle corresponding to proton when matter and antimatter come into contact they annihilate each other producing pure energy se pacharchi correct answer kuda 1 only 1 and 3 only 2 and 3 only 1 2 3 your answer correct kuda antimatter kono 17 answer 17 17 आंसर होची करेक्ट आंसर यार आंसर होची बी 1 एंड 3 2 टा भूल अछि कारण पोजिट्रॉन जोटा कि गोटे एंटीमैटर सेटा कहारो एंटीमैटर माने कोन ना मास समान रहइबो बट चार्ज ऑपोजिट रहइबो एंटीमैटर माने सेमिति माने जदि गोटे नेगेटिव चार्ज अछि मैटर रो तार एंटीमैटर पॉजिटिव चार्ज थिबो बट मास समान थिबो पोजिट्रॉन डा एंटीमैटर ऑफ कहारो प्रोटॉन हुए इलेक्ट्रॉन हैला से गोटे पे स्टेटमेंट भूले गला next with reference to the Kodaikanal solar observatory which of the following statement is or are correct it is known for the discovery of Evershed effect discovery pai it is known it is operated by defense DRDO select the correct answer using the code given below तो Kodaikanal solar observatory भितर क्वेश्चन अछि तो कौन पे न्यूज रे अछि फॉर डिस्कवरिंग एवरसेड इफेक्ट आउ इट इज ऑपरेटेड बाय डीआरडीओ ए दिटा भितर स्टेटमेंट रो कोटा करेक्ट हमको कहियार अछि यार आंसर 18 ना आंसर एक्सक्यूज
करेक्ट 18 आंसर होची ए 2 करेक्ट काहेंकी 2 इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट डीआरडीओ हैला इट इज नॉट इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैला डीआरडीओ नुहे एटा इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हबो एवरसेड इफेक्ट या माने कोन एटा तो क्वेश्चन गोटे एमिति एथ्रु डायरेक्ट क्वेश्चन गोटे पळे आसो एवरसेड कोन ना जो सन रे जो सन स्पॉट्स अछि सेथ्रु जो गैस गुडा बाहर रेडियली आउटवर्ड जो गैस गुडा मूव करछन सेठी बहुत एक्सप्लोजन होची और रिएक्शन होची सेठी बहुत सारा गैस जनरेट होची से जो गैस गुडा जो रेडियली आउटवर्ड मूव करछन से जिंसटा को स्टडी जो करूछन ताकू आ से जिंसटा जो होची ताकू कहा जाउची एवरसेड इफेक्ट और एई टेलीस्कोप रे यूज करके से जिंसटा को डिस्कवरी कराइछि नेक्स्ट India's biotechnology sector comprises which of the following biopharmaceuticals bioagriculture bioindustrial and bio IT services एथे कोन डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आंसर 19 रो कोन इंडिया रो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर कोन कोन जिंसटा को कंप्राइज करजी जत्ते ब्रॉड भाबी परिबो कना बहुत बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर टा बहुत ब्रॉड जिंस को कवर करूची आंसर कोन यार 19 कॉमन सेंस क्वेश्चन एटा करेक्ट ब्रॉड भाबी परिबो 19 ओटी सब जगह कवर करची NASA has recently launched the Tanagar 1 satellite 2 the satellite NASA launch करची ता काम कोन track methane emissions study extraterrestrial gamma radiations study heat emissions at the earth's pole remove debris from the space Tangar 1 जो satellite launch करे तारा काम कोन डायरेक्ट क्वेश्चन जस्ट खाली ता फंक्शन टा कोन 20 रो करेक्ट 20 रो आंसर होची ए टू ट्रैक मीथेन एमिशंस हैला जो ग्रीन हाउस गैस बाहर छी बहुत ग्लोबल वार्मिंग होची से इन सब ट्रैक करिया को मीथेन एमिशन को ट्रैक करिया को नासा एटा लॉन्च करची आ गोटे एई जिंसटा बहुत न्यूज रे अछि रिमूव डेब्रिस स्पेस डेब्रिस बहुत टाइम रे न्यूज रे अछि बहुत नासा लॉन्च करलानी ता प्रोजेक्ट ये इंडिया लॉन्च करची नेत्र प्रोग्राम स्पेस डेब्रिस रिलेटेड ए सब प्रोग्राम्स लॉन्च कराइची वैन एलन रेडिएशन बेल्ट रे बहुत सारा स्पेस डेब्रिस प्रेजेंट अछि यूजुअली स्पेस रे भी बहुत स्पेस डेब्रिस अछि तो सेही से बहुत गोटे हडल हमकु देखा दउची सैटेलाइट लॉन्च करिबारे कि स्पेस शटल लॉन्च करिबारे सेही पे बहुत नासा भी लॉन्च करची इसरो भी लॉन्च करची स्पेस डेब्रिस पे एटा टिके पढिया को ट्राई करबो ए रिलेटेड जदी किछि मिशन न्यूज रे देखुचो सेटा को बुझिया को ट्राई करबो और स्पेस डेब्रिस कोन भी जानिया को ट्राई करबो with reference to the sonoluminescence consider the following statement sonoluminescence is the emissions of light from a bubble in a liquid when it is subjected to powerful sound waves Hala? The exact mechanism of sonoluminescence is well understood and fully explained by modern science 21 रा आंसर कोन one only two only both 1 and 2 neither 1 and 2 मु देखे दउची स्टेटमेंट दीटा sonoluminescence कोन को स्टेटमेंट ता ठीक को स्टेटमेंट ता भूल 21 रा आंसर ठीक अछि देखि दबा सोनोल्यूमिनेसेंस जिंसडा कोन सेटा फर्स्ट हम जाने टर्म देकी पचार दे परिबो कोन जिंसडा तो या जिंस होची कि जते बेले गोटे वाटर इन लिक्विड देखियो कहि दउची जते बेले गोटे वाटर लेयर अछि कि गोटे कॉलम ऑफ वाटर अछि आ भितरे गोटे बबल फॉर्मेशन हैला भितरे पानी भितरे जते बेले ताकू हमें पर्टिकुलर साउंड वेव की साउंड फ्रीक्वेंसी रे ताकू हमें इंपैक्ट करूचे तो सेटू ल्यूमिनेसेंस देखा जाउची ल्यूमिनेस प्रॉपर्टी देखा जाउची तो सेटा को आछि सोनोल्यूमिनेसेंस
सेटा कोन होची फर्स्ट जेतबे साउंड रो इंपैक्ट ता ऊपर पडुची फर्स्ट सेटा एक्सपोर्ट माने टिके एक्सपैंड करची देन इम्प्लोड करची इम्प्लोड माने कोन इम्प्लोड एक्सप्लोड माने कोन बस्ट करबा इम्प्लोड माने कोन कंप्रेस कर हे कि ये हेजबा एबे रिसेंटली देखिथिबो गोटे सम बिजनेसमैन और साइंटिस्ट माने जाइथिले गोटे सबमरीन रे जोटा कि इम्प्लोड करि गला पानी भितर ड्यू टू हेवी प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम सेटा इम्प्लोड करि जाय माने कंप्रेस हे जाय हला एक्सप्लोड करनी पानी भितर को जिंस एक्सप्लोड करियाटा इज वेरी रेयर पानी भितर मोस्टली जिंस इम्प्लोड करे ड्यू टू हेवी प्रेशर हला तो सोनोल्यूमिनेसेंस जिंसटा होची से जतले पानी भितर गोटे बबल फॉर्मेशन होची और तापरे साउंड रो गोटे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्ट करूची तो सेई बबलटा ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी देखौची से जिंसटा कुआ जाउची सोनोल्यूमिनेसेंस तो सोनोल्यूमिनेसेंस इज द एमिशंस ऑफ लाइट फ्रॉम अ बबल इन अ लिक्विड देखो इन अ लिक्विड not on a liquid upere जो bubble ने in a liquid when it is subjected to powerful sound waves exact mechanism से कहिछि कि it is understood but exact mechanism still now it is not understood हला clarity नै जिंस विषय thank you next okay next होची 22 escaped mission recently seen in the news aims to study heat emissions at the earth's pole investigate the interaction of solar wind and mars magnetosphere track and measure methane emissions at a global scale for next होची conduct a comprehensive study of venus emission कोन it is associated with what और केयर पर्पस कोन पे ये कराई छै इ भितरु को स्टेटमेंट ता करेक्ट द क्वेश्चन नंबर 22 22 यार आंसर होची बी एई प्रोजेक्ट विषय में किछि कहि दोची एस्केप मिशन ब्रीफ रे कहि दोची जानि था तो एई जिंसटा लॉन्च कराई छी ब्लू ओरिजिन और नासा कंबाइंडली एई जिंसटा लॉन्च ब्लू ओरिजिन कहार के कहि परिबो एटा गोटा कॉमन क्वेश्चन जोटा कि न्यूज रे आसुची ब्लू ओरिजिन इज ओन्ड बाय हुम कमेंट सेक्शन में ट्राई कर आंसर करिया को ठीक अछि मु कहि दोची ब्लू ओरिजिन होची जेफ बेजोस करो हला Amazon रो ओनर Amazon जो डिलीवरी ऐप यूज करछ तार ओनर ब्लू ओरिजिन आउ नासा मिसी की लॉन्च करछन इन्वेस्टिगेट इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड एंड मार्स मैग्नेटोस्फीयर मार्स रो मैग्नेटोस्फीयर ऊपर सोलर विंड्स रो को इंपैक्ट करछि सेही प्रोजेक्ट ता होची एस्केप मिशन हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट तो इफेक्ट ता कोन हमको जानिया को पड़िबो हला the question गुड़ा हम पढ़ दा ऑप्शन गुड़ा piezoelectric materials generate an electric voltage when subjected to mechanical stress the piezoelectric effect is reversible meaning applying an electric field can cause a mechanical (23) रा आंसर कहि दोची यार आंसर होची 1 and 2 ओनली एटा करेक्ट हला पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ता कोन फर्स्ट हम जानिया पड़े टर्म ता ही क्वेश्चन आस जाय पारे पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होची किछि गोटा में मेकानिकल स्ट्रेस दोच आइदर हम ताको स्ट्रेच करूचे आइदर ताको कंप्रेस करचे जदि हम तारो मेकानिकल स्ट्रेस ता ऊपर पकोचे सेथिरे इलेक्ट्रिक एनर्जी जदि जनरेट होउची देन पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ताको कहै ए जिंस न्यूज रे काहे कि अछि ना हमें अर्बनाइजेशन में रैपिड रेट रहउची इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत बढ़ुची हैला
तो एथरे हमको कोन हमको बहुत एनर्जी दरकार होची तो हमें एई टेक्नोलॉजी यूज करी कि भी एनर्जी जनरेट करि परिबा केमिति ना फॉर एग्जांपल हम जदी से सब्सटेंस गुडा को पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस गुडा को फुटपाथ रे लगे दबा देन लोक माने ता ऊपर मूव करिवे सेटा कंप्रेस होबो नले स्ट्रेच होबो तो सेटू इलेक्ट्रिसिटी बाहरिबो तो जते लोक मूव करिवे से ऊपर से फुटपाथ ऊपर तो सेते इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होबो तो सेटू हमें एनर्जी नीड हमर फुलफिल करि परिबो तो हेत पे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यूज रे थिला तो इफेक्ट होची कोन ना हम सेटा गोटे एमती सब्सटेंस जहा को हम मेकानिकली स्ट्रेस करबा कि प्रेशर करबा कंप्रेस दबा तो सेटू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होबो 1 and 2 करेक्ट आउ 3 और 4 काइंग भूल टिपिकली गुड कंडक्टर्स बोले से माने गुड कंडक्टर्स न थांदी आइदर इंसुलेटर्स थांदी नॉन सेमीकंडक्टर्स थांदी हला दे आर लिमिटेड टू नेचुरल मिनरल्स नाही खाली नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल भी क्रिएट करि होबो हला एटा तो हम ऑलरेडी देखि देछ आउथरे देखि दबा चांदीपुरा भाइरस एटा ऑलरेडी करि छे लिस्टेरोसिस लिस्टेरिया कॉज्ड बाय पढिथिले आगुरु एटा कोन लिस्टेरोसिस इज कोन कॉज्ड बाय वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगाई कोन के कहि परियो 25 लिस्टेरोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज हला पढ़ी दिले एटा ऊपर बैक्टीरियल डिजीज इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड ट्रीटेबल ठीक इट इज सिम्पटम्स इंक्लूड फीवर चिल्स एंड हेडेक एंड कैन टेक अप टू 10 weeks some individuals the infection is especially dangerous for people with weakened immune system pregnant women and people over 65 तो यार आंसर कोन कहि दो जे एटा ऑलरेडी पढ़ी सारछ हम ऑल दी अबव सब जगह करेक्ट तो सल्ला आज एतिकी पार्ट आज हमें कंप्लीट करिवा नेक्स्ट आउटे सेशन रे फर्दर आगो को फर्दर प्रोसीड करिवा पार्ट 4 रु आज जेतिकी क्वेश्चन डिस्कस करले ट्राई करे सब जिंस नोट डाउन कर दबा को जिस्ट रे काई ना एबे एग्जाम पाखो को आछी एते सारा जिंसटा कवर करिया भी कष्ट जस्ट जिस्ट टिके टिके से जिंस रिलेटेड आईडिया थिले भी आंसर करी हे जिवो बहुत जिंस ऑप्शन देखि कि एलिमिनेट करी कि कॉमन सेंस लगे कि आंसर बहुत जिंस करी हे जिवो तो नेक्स्ट मीट करिवा नेक्स्ट क्लास रे फर्दर आगो को फर्दर प्रोसीड करिवा नेक्स्ट क्वेश्चंस गुडा रे थैंक यू